आप भी ऐसे इधर आ जाओ। Good evening, all of you. Cricketer, Rajwada Cricket League 2023 सीजन नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जेके पेविलियन नया पुरा कोटा में आज का यह दूसरा दिन है। दूसरे दिन का पहला मुकाबला उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स और अजमेर मेरू वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा। आज की जो पिच है कल के मुकाबले किस प्रकार ये खेलने वाली है और किस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये हमें इस समय हमारे जो अध्यक्ष हैं केडीसी के विजय शर्मा जी पिच रिपोर्ट जरूर देंगे। सर, कल के मुकाबले आज की जो पिच है उसके बारे में आप जरूर बताएं। जिस प्रकार कल थोड़ा घास भी था, लेकिन आज की विकेट पे घास इतना नहीं है, क्रीक थोड़ी जरूर है, तो आप पिच रिपोर्ट जरूर दें आज की। कल जो विकेट था, आज नया विकेट है और इस पे ग्रास काफ़ी कम है, सपाट विकेट है और मैं समझता हूं कि बैट्समैनों के लिए ये बिल्कुल अच्छा विकेट है और एक बड़ा स्कोर इस पर हो सकता। जी बिल्कुल, कल घास होने की वजह से ज़्यादा बल्लेबाजों को खेलने में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन आज इस प्रकार से विकेट दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं ये बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान रहेगा ये विकेट। कुछ थोड़े से क्रैक्स हैं लेकिन सपाट विकेट है, सूखा हुआ विकेट है, इसलिए वास्तव में ये बल्लेबाजों के लिए अच्छा विकेट साबित हो सकता है। एक बड़ा स्कोर यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। हमारे साथ मैच रेफरी भारत भूषण गौतम, जो बीसीआई से रणजी और दिलीप ट्रॉफी दोनों में भूमिका निभा चुके हैं, और हमारे अंपायर अनिल वर्मा और रिद्धि गुर्जर हमारे साथ हैं। स्टेट पैनल अंपायर अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद।
Good evening, ladies and gentlemen. क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग सीजन नंबर 7 2023 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जेके पवेलियन नया पुरा कोटा में इस सीजन का आज का दूसरे दिन का पहला मुकाबला उदयपुर और अजमेर मेरू वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं दोनों टीमों के कप्तान। उदयपुर टीम के कप्तान हैं चंद्रपुर और अजमेर मेरू वॉरियर्स के कप्तान अरजीत गुप्ता। मैच रेफरी भारत भूषण गौतम बीसीसीआई और रणजी ट्रॉफी एंड दिल्ली ट्रॉफी में भूमिका निभा चुके हैं। अध्यक्ष केडीसीए विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद, अंपायर अनिल वर्मा, रिधि गुर्जर हमारे साथ मौजूद, स्टेट पैनल अंपायर अविनाश सिंह जी मौजूद। और इस समय टॉस के लिए शिका उछालेंगे। मैच रेफरी भूषण गौतम, हेड कॉल किया गया है स्टेल। अरजीत, आपने टॉस जीता, पहले क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे पहले। क्या सोच के बैटिंग कर रहे हैं आप? T20 गेम में पहले बैटिंग करना थोड़ा अच्छा टारगेट सेट करना इजी रहता है, चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है और जिस हिसाब से हमारी टीम का बैलेंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि बैटिंग पहले की जाए। कहां तक आपका टारगेट सेट करने का मन है? जिस हिसाब से कल मैच हुआ तो उस हिसाब से देख के लग रहा है कि 170 के आसपास टारगेट होना चाहिए। बाकी जैसे आज नया दिन है, नई पिच है, थोड़ा मैच चलेगा तो पता चलेगा टारगेट कितना बनेगा सर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो चंद्रपाल सिंह, यहां पर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, तो अगेंस्ट टीम को कहां तक रोकने का आपका मन है? यस, जैसे अरिजीत भैया ने कहा कि 170 पार स्कोर होगा, बट हम कोशिश करेंगे कम से कम रोकने का उनके लिए इस विकेट में। ओके, कल जिस प्रकार से विकेट खेल रहा था कहीं न कहीं बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कतें जरूर हो रही थी, लेकिन आज का विकेट जितना सपाट दिख रहा है तो बल्लेबाजी के लिए भी कुछ बताएंगे आप? हाँ, बैटिंग के लिए अच्छा विकेट है, बट होपफुली स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प हो सकती है, बट देखते हैं कैसा विकेट चलता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट चंद्रपाल। तो यहां पर अजमेर वॉरियर्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। चलिए आइए रुक करते हैं अब कॉमेडी बॉक्स की तरफ।
महीनों की चाशनी में सने नगीनों को चमक जाए जहां सारा क्रिकेट के कोई दूरों से लाडले रजवाड़े राजस्थानी फख्र करे कल इन पर हर हिंदुस्तानी ये लाडले रजवाड़े राजस्थानी फख्र करे कल इन पर हर हिंदुस्तानी ये लाडले रजवाड़े
टॉस यहाँ पर अजमेर वॉरियर्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है कप्तान अर्जित गुप्ता। और मैच जल्द शुरू करें अंपायर्स, मैच जल्द शुरू करें। ओपनर्स, दोनों ओपनर्स जल्दी आए। रिक्वेस्ट है अंपायर्स कि जल्द से जल्द इस मैच को शुरू किया जाए। क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग 2023 सीजन नंबर 7। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का पहला मुकाबला उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स वर्सेज अजमेर मेरू वॉरियर्स के बीच में खेला जा रहा है और ये एक शानदार बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। बल्लेबाज जल्दी आए, दोनों ओपनर्स। अंग्रेजी में कहूं? दोनों बैट्समैन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी गेम को शुरू करें। कैप्टन, फील्डिंग टीम, get your field structured as quickly as possible. Requesting upon the two umpires officiating in this game, please make sure the game starts as quickly as possible. Thank you. दोनों अंपायर से निवेदन है कि गेम को जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं करिएगा। शुक्रिया। Good afternoon and welcome to the JK Pavilion International Cricket Stadium hosting the Cricket Adda Rajwada Cricket League 2023, the 7th edition of the tournament where Ajmer is featuring in this contest against Mewad Udaipur. Lot of expectation, strong breeze blowing across the ground, cotton-like clouds developing in the skies. Here, this wonderful place here in Kota, famous for educational institutions, lush green outfield and sporting surface to play the game. These are ideal conditions with clouds developing. It's going to be soothing experience for the players here. With when they arrived on the ground, it was hard, humid and very, very difficult for the players to breathe easily. अंपायर से निवेदन है कि गेम को जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं करिएगा। इट्स ऑलरेडी लेट, 15 minutes late. So opening pair has taken the ground at the moment, just warming up. The non-striker looking to strengthen the field through the offside. They got slip in position on the offside. Third man is patrolling on the boundary. Man at the backward a point position. Man at the cover position. Extra cover is slightly square is there and mid on, and man at the mid wicket, and fine leg is patrolling on the boundary. Only 2 fielders allowed outside the 30-yard circle in the first 6 overs of the power play, where the batters would like to take the full advantage against the new ball with pacers in operation. Shadows lengthening with clouds coming, hovering over the ground. The right-hand batsman is a tall man, all set to receive the first ball of the match. Driven through the covers straight to the man. Pitching it up, trying to get some movement away from the batsman. Knows with a new hard ball there is a possibility of getting some movement and enticing the batsman to play a false stroke. No wonder they got slip in position here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. Rights the bounce and glides the ball down to the third man boundary. They got the fieldsman in position. Single. He gets off the strike, gets off the mark and run on the board for the team. This is the third match of the championship on day number 2 in the Cricket Adda Rajwada Cricket League 2023, the 7th edition of the tournament. In the initial part of the game, the batters trying to gauge the pace and bounce from the surface, and that's the time where the bowlers try to experiment with their length, trying to pitch it up and get some movement.
Just back of length delivery, moving away from the batsman, committed on the back foot and just pushed the ball into the cover point region for no run. One without a loss on this lush green outfield. The ground staff has done a phenomenal job in preparing the conditions. And these are the best possible conditions that I could imagine in last 5 to 6 years that have seen the RCL developing into a major tournament in Kota here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. Midoff is sitting on the edge of the 30-yard circle. Goes for the big shot, makes a fine connection. This is the first boundary. It's gone all the way for a 6. Picks it from well outside the off stump and smacks it over mid-wicket for a 6. A positive stroke. What a way to get off the mark with the maximum. A magnificent hit over mid-wicket for a 6. Giving the chance to the bowler back again. No changes. The field remains same. Short ball trying to work to the onside. Huge appeal for LBW and he's been given out. A length delivery straightening up. Didn't rise to the expectation of the batsman. And here comes the first wicket. He takes the revenge after conceding a 6. It's wicket to celebrate for the bowling team. 7 for 1 in the first over. Wanted to play the pull shot behind the square on the onside. Ball is staying low. Umpire thought that was going on to hit the stumps. Straightening up. Staying low. Straightening up. Was beaten in his attempt of playing the pull shot through the onside. After hitting a magnificent 6, he is dismissed. So early celebration in the fielding team as well, as they've been able to find the early breakthrough that they were searching for in the first over. Sun is hiding behind the clouds on this wonderful cricket ground. A lot of dignitaries present here. Few trees in the backdrop as well, as the left-hand batsman trying to take farm strike with slip, and third man on the boundary sporting the jersey number 14, man at the backward point position, man at the cover point, extra cover and mid off on the offside, mid on, mid wicket, and fine leg is patrolling on the boundary. He's beaten outside the off stump, movement away from the left-hand batter. A successful over comes to an end. It's 7 for 1. These are the initial moments in play here at the JK Pavilion International Cricket Stadium in Kota, located in Hadoti region. The capital city in Hadoti region. Seems there is going to be introduction of a spin bowler straight away after fast bowler conceding a 6, taking a wicket as well, but they believe that the spinners are going to get more purchase from the surface. Left and right hand combination. Looking to restructure the field again. Now he's dropping the man on the boundary at the long on region on the offside. Third man up in the circle. Man at the fine leg up in the circle as well. Deep mid wicket and long on the boundary on the onside. And he's going to operate from the pavilion end. From round the wicket, he pushes the ball into the covers. It's been well fielded with the fieldsman sporting a white floppy in jersey number 1, it seems. So gets a dot ball straight away. Is he going to take chance maybe through the covers? A lofted stroke.
He goes back and tucks the ball away with a lot of time available with the field spin position on the boundary at the long on region. Easy single accumulated. The score goes up to 8 for loss of 1 wicket. Now asking the fieldsman to go slightly square at the long on position, mid wicket on the boundary, long on the boundary. No man in catching position. The skidding of the surface, bowling with the arm on that occasion. Hovering around the leg stump. Looking to pin the batsman down, not allow any free opportunity, no width, no length to work with. Nicely tucked away on the onside into the vacant region. Wanted run sent back, rightly so. Fieldsman is sporting jersey number 9, charging towards that ball. He played with the soft hands, knew the fieldsman is quite capable of rattling the stumps. Now from round the wicket. And looking to punch the ball through the offside, straight to the man at a point position. Runs hard to come by. This has been a fine over so far. Just holding the line around the off stump, middle and off stump. Bowling flat and quick. Lovely tossed up delivery and just falling in front of the fieldsman at square position. He survives. And that marks the end of a fine over from the pavilion end. 2 overs gone. 8 for 1, just a run from this over. In the first 6 overs, where the focus from the batting team has always been on taking charge and utilizing the restrictions of the fieldsmen, only 2 allowed outside the 30-yard circle, which is not translating into result at the moment. From batting perspective, slightly challenging surface this, where there is some help for the fast bowlers, as we saw in the first over, indifferent bounce and ball skidding when the spinners are operating. So it's going to be tough for the batters initially to get fluency in their stroke making. The cameraman covered face to cover and a fast bowler to continue from the far end. Chasing a wideish delivery, no footwork from the batsman, was too close to the body to cut this one away. But one change, they decided to remove the fieldsman from the slip region. Third man on the boundary, looking to strengthen the field on the offside, looking to plug that gap from where batters can easily, freely score runs. No slip at the moment. Managed to beat the outside edge with that away going delivery. Someone who hits the deck and get the ball to bounce as well. That ball is straight low, almost hitting him on the pads. Indifferent bounce with indifferent pace. That can be as challenging as you may have witnessed today morning in England Oval, where India finding it difficult against mighty Australians because of the indifferent bounce. And that is exactly what we have seen so far, if you go by the evidence that we received in the first 2 overs. Goes for the big shot. He gets it over the top of extra. It's going away to the boundary. It's gone all the way for a 6. Looking to pitch the ball up. And handsomely driven. A lofted drive over extra cover for a 6. A superb 6. Very well timed. He's not worried about playing it on the rise. He's a tall man. And he trusts his process of hitting it through the line. He gets it over. And he gets a 6 as well. 2 6s already in this innings. 2 batters, a right and left in combination with different heights. More changes inflicted in the field. Finally goes up in the circle. Man at the mid-wicket position or slightly at the squarish position on the boundary on the onside.
Gets it fine, not quite. Wants a run here. We'll have to wait for a signal from the umpire. Signals a leg by. Another run to the batters, rather to the extra kitty. It's a fine afternoon here at Kota, JK Pavilion Stadium located in Nayapura, Kota. Cricket Adda, Rajwada Cricket League 2023. The 7th edition of the tournament is underway here. Today, the day number 2, Sporting Sunday here. Smacked it back, not quite getting the timing right. Wanted to blast it down the ground. Getting high on the bat, on the splice of the bat. Didn't get the necessary timing on that occasion. So it remains in that vicinity, or the way of finding the strike rotation that's going to be key in order to address most of the issues to begin the partnership. Was just reaching for the ball. It was way outside the off stump. Umpire signals a wide. This is the situation here. Comes up from the far end. Reaching for the ball and caught! Beautifully taken! At backward point position, second wicket down. Second wicket for him, and Sohail. The batsman Perry says it's 2 wickets down. Wanted to chop it behind the square on the offside. A fine low catch taken. 2 wickets in 3 overs. They're tottering along with bat in hand. Struggling to get the timing. Well outside the off stump. Tempting the batsman to play an extravagant cricket shot. And hence chopping it straight into the hands of the fieldsman at backward point position. A fine low catch accepted gleefully by the fieldsman. Second wicket for the bowler, and it's 2 wickets down. Early jolts received. Will they keep the man at the slip position? Will the spinner continue? With fast bowlers succeeding, the focus is on getting the maximum out of the surface with a new hard ball. Will be variety, not the right arm. The left arm quick will be operating. Still no slip in position, with the possibility of getting the ball to edge down to third man. Left arm seamers in operation. There is always a scope at the slip position, but captain thinks otherwise. They got third man patrolling on the boundary. No slip in position, no gully, backward point, man at the cover point position on the offside and mid-off. There is a yawning gap available from cover point to the mid-off region through the offside to get a boundary away. Full toss, as he found the gap not quite. Chain of fieldsmen on the offside, backward point, man at the back point position and cover point on the offside. Not much of gap, the area from where he wanted to thread it through the offside to get a run. Didn't get the necessary placement. Right now they're posting the fieldsmen on the boundary at the point position. A man from the third man comes up in the circle. Strong breeze. In the commentary box, not on the ground. He's beaten, trying to work the ball through the onside. The angle away, a little bit of movement of the seam. Did not come to the expectation of the batsman on that occasion.
and collected by the keeper. It's been a calm start, 2 wickets already, and this span of 3 overs of pure deliveries into the game number 3 of the competition. Hard, it is straight to man at mid-on, no run. It's a gentle talk, and where he is suggesting the lines that he should be operating with, or is he thinking about bringing the ball back to the right-hand batsman with the fine leg up in the circle, and a man patrolling in the offside on the third man boundary. Left arm over the stumps to right-hand batsman, goes up and is bowling to right-hand batsman. He's trying to play the shot through the onside, gets the top edge and falling short of the fieldsman who's rushing in from the mid-off position. There is no run. Challenging conditions for the batters to put the deliveries away. The length has been very good from the left-arm seamer so far in this over. Always a massive challenge for the bowler to operate in power play overs. All the factors loaded in their favor, but today the pitch has been of some assistance to the fast bowlers. Scattered clouds in the skies. Rushes in with a little Johnson jump, goes up and bowls this time short ball and plays it fine with fine leg up in the circle. It was a hovering around the leg stump. It's been pulled behind square on the onside for 4. Short ball taken care of. Wanted to bounce him out. The batsman was up to the task, got it fine with fine leg up in the circle between the keeper and fine leg and down to the boundary for 4. Wants to close the over in the best possible way possible. Rushes up and is bowling to right hand batsman. Gets a short lifting delivery and just looking to work through the offside. Is beaten, taking the pace of the ball on that occasion. It seemed it was indifferent bounce and slightly change in pace as well. That marks the end of over where they've been successful in getting a boundary. 4 overs have been bowled here at JK Pavilion International Cricket Stadium, Kota, hosting the 7th edition of Rajwada Cricket League RCL 2023. Sports plus entertainment guaranteed, and the credit should be given to the ground staff as well for preparing wonderful conditions for the batters and bowlers to experience. The pitches have been lively and the outfield is absolutely fantastic. It's lush green, it's quick. चार ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेर वॉरियर्स का स्कोर है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अरिजीत गुप्ता कप्तान है, वो अभी उन्होंने खाता भी नहीं खोला है। और इस चहलकदमी के साथ अपना खाता खोलते हुए अरिजीत गुप्ता। टॉस जीता यहां पर अजमेर मेर वॉरियर्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 5 ओवर इस समय प्रगति पर है, 21 रन बन चुके हैं, 2 विकेट खोए हैं अजमेर मेरू वॉरियर्स ने। आदिल 12 के क्यू योग पर खेलते हुए। शॉर्ट पिच बॉल और यहां पर कीपर से तो रोके भी नहीं, फील्डर भी चूक गए और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। अब वाइड गेंदबाजी ने कुछ ज्यादा
अतिरिक्त करने की कोशिश की थी। अतिरिक्त करने की कोशिश में वो वाइड कर बैठे और यहाँ पर 5 रन टीम अजमेर वॉरियर के खाते में जुड़ते हुए कुल योग 26 रन हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। आरसीएल सीजन 7 आज का ये दूसरा दिन है। पहला ही मुकाबला चल रहा है यहाँ पर अजमेर वॉरियर्स और उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। अभी भी पावर प्ले चल रहा है और इस पावर प्ले में देखना होगा कि 5 ओवर अभी चल रहा है। बल्लेबाजों की मंशा होती है ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की। हवा में है, ऊंचा है, उसके नीचे फील्डर हैं, 2 फील्डर आ रहे हैं लेकिन कैच ड्रॉप हो गया है। ये जो क्षति है ये उदयपुर के लिए थोड़ा सा भारी हो सकता है। नंदू जो कि दौड़ते हुए उस कैच के पीछे चले भी गए थे लेकिन अंततः वो नजरें बना नहीं पाए वहां पर, वरना यहां पर एक और बहुत बड़ा जोखिम भरा हो सकता था अजमेर वॉरियर्स के लिए। एक बार फिर लेग स्टंप पर भटकते हुए बॉलर और अंपायर ने दोनों अपने हाथ फैला दिए हैं कि यह वाइड है। अतिरिक्त रन जुड़कर स्कोर में और इजाफा होता हुआ पॉइंट के साथ गली है। स्लिप कोई नहीं रखी गई है, फाइन लेग बिल्कुल ऊपर है, मिड विकेट को अंदर रखा गया है, मिड ऑफ मिड ऑन दोनों ऊपर हैं और स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री पर। छोटी गेंद पुल करने की कोशिश अनुमान से कहीं ज्यादा धीमी गति से आई। बल्लेबाज ने पुल करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए बल्ले और गेंद में। ये गेंद छोटी गेंद और बढ़िया शॉट, फाइन लेग के ऊपर से शानदार चौका यहां पर। अरिजीत गुप्ता जैसा बल्लेबाज ऐसे गेंद को कहां छोड़ने वाले थे। जैसे ही देखा उन्होंने कि लेग स्टंप पर है, शॉर्ट पिच बॉल है, अपना दायां पैर है वो एक नटराज की तरह हवा में ऊपर लहराया और बहुत ही बढ़िया तरीके से शॉट को खेला। 5 ओवर की समाप्ति पर अजमेर वॉरियर्स का स्कोर है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर हवा में है, बढ़िया शॉट है, कवर के ऊपर से जा रही है गेंद, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। चर भावे की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और पिच गेंद थी जिसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को निकालते आदिल ने कवर के ऊपर से हवा में लॉफ्टेड शॉट खेला था और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है, बल्लेबाज की मंशा रहेगी कि वो इस ओवर में
जितने रन्स बटोर सके बटोरें, क्योंकि दो ही फील्डर जो हैं वो 30 यार्ड घेरे के बाहर ही रहते हैं। और एक बार फिर बढ़िया फुल शॉट मिड विकेट की ओर जा रही है, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं होते तो भी क्या करते हैं। Fraction shot and taking full advantage on that occasion with that horizontal bat shot which went away in front of score on the onside for 4. Plays it defensively, wants a run, is going to take a run, trying to generate some momentum into the batting department. Last couple of overs have been quite fruitful. Third man on the boundary, man at the fine leg is up in the circle at the moment. There's a third man hovering there on the boundary, square leg on the boundary on the onside. The focus has been on bouncing the batsman out. Too far outside the off stump. Easy call for the umpire to make. Wide signal. It's hot, it's humid, it's balmy afternoon here, late afternoon on this hot and humid day here, Sporting Sunday. The gorgeous looking JK Pavilion Cricket Stadium is hosting the 7th edition of Cricket Rajwada Cricket League 2023. Looking to rectify his lines. Punched beautifully straight to the fielder. Just waited for that ball, wanted to just thread it in front of square on the offside between point and cover. Play the typical Tendulkar punch stroke through the offside to earn a boundary for himself. Was in a very good position to push that one through, but not quite getting the timing right. Eventually placing the ball through the offside. He's an elegant batter. He's an excellent timer of the cricket ball. Goes over the top, wide of third man down to the boundary, where they got the fieldsman in position, not quite skidding off the surface there. Wanted to get it over the top and down to the boundary, but men going across and preventing a certain boundary. Runs coming. He's got lazy elegance about his stroke making. It's a beautiful timer of the cricket ball. Not quite getting the timing again. They will scamper through for a single. Two right-handers in the center. He's going to change the angle, persisting with the same. Arjit Gupta, a lot of experience of playing domestic cricket, Ranji Trophy for Rajasthan. Has always been a beautiful player, a beautiful timer of the cricket ball. Pulled away into the gap on the onside. They got the fieldsman with a tumbling effort. Excellent job on the field. Getting on the top part of the bat on that occasion. Arjit and Adil farming the strike and building a partnership
The focus would be on bat, construct innings, as they lost a couple of early wickets. Batting first after winning the toss on this relatively challenging pitch to bat on. Two batters with the technique and temperament to build the innings together. They're in the middle, playing that rescue act for the team consolidation period at the moment. They couldn't take the full advantage of the first 6 overs with losing a couple of early wickets inside 4 overs. Then the focus has been on punishing the poor deliveries and a strike rotation. He's taking his time as the captain is maneuvering the field on the onside. Left arm spin has managed to get some turn too far outside the off stump, wide signal by the umpire. Is he going to get a lot of purchase from the pitch? It seems. Beautifully bowled, drawing the batsman forward on that occasion. Wanted to take a single by placing the ball into the offside, into the cover region. Fieldsman was charging in, good anticipation from the fieldsman at the extra cover position on the offside. Oh, he's beaten with a beautiful delivery, just holding in the pitch and skidding through. Wanted to blast it through. Strong breeze from left to right. From the position we are sitting at the moment, blowing across the ground. It's an open stadium. Couple of stands, 3 stands in there. Almost return catch, dropped. Take a run, survives. Adil survives on that occasion. It was firmly hit back to the bowler, in and out, bursting through his hands. Arjit Gupta is on a strike. So that's beautiful play. Just watching the ball, allowing the ball to come onto the bat, just pushing the ball with a soft hand through the covers. Fieldsman is stationed on the edge of the 30-yard circle on the offside and has been able to take a single. He understands the threat that the bowler is posting to the 2 batters at the moment, and that's why trying to play him differently. Pushes the ball hard into the offside, no run. What's in his store? Smacked it through the covers. Fieldsman will get there with sliding effort there on the boundary. A run taken. A brilliant over from the left-arm spinner from the far end. And let's go back to Goswami, who is sitting by the boundary ropes to describe the action for the next few overs. और यहाँ पर अजमेर वॉरियर्स ने जिस प्रकार से उनकी शुरुआत जो हुई थी, और वो कोई ज़्यादा अच्छी हुई नहीं, लेकिन उसके बाद में जो शुरुआत हुई वो बहुत ही बढ़िया धैर्य के साथ आगे बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया. सात ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेरू वॉरियर्स का स्कोर 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर. कप्तान अरजीत गुप्ता 7 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं. आदिल 26 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं. गेंदबाजी पायलट सिंह के हाथ में. पायलट नंबर 1 जर्सी पहने हुए. आते ही स्क्वायर लेग के ऊपर से थे हमारा 6 रनों के लिए.
जैसे देखा लेग स्टंप पर है ये गेंद और बहुत ही बढ़िया खूबसूरती के साथ इसको स्वीप किया था। बहुत बड़ा लंबा छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से आदिल के बल्ले से। एक बार फिर ये अच्छी गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, अच्छा कमबैक करते हुए इस बार पायलट सिंह। आदिल एक बढ़िया खतरनाक मूड में खेल रहे हैं इस समय। और फिर से लीजिए मिड विकेट के ऊपर से फील्डर वहां मौजूद है लेकिन कोई फायदा नहीं है। दो छक्के लगने के बाद बहुत अच्छा कमबैक किया यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर्स ने। एक बार फिर वही लॉन्ग ऑन के ऊपर से जा रही है इस बार, बहुत लंबा बड़ा छक्का। तीन छक्के लगे हैं इस ओवर में और कप्तान चंद्रबोल सिंह पहुंचे हैं वहां पर। पायलट सिंह के पास कुछ मंत्रणा हुई है, तीन छक्के लग चुके हैं, बड़े बड़े शॉट खेल रहे हैं यहां पर आदिल। आदिल एक बार फिर स्ट्राइक और इस बार बढ़िया शॉट, कट किया, बहुत ही बढ़िया पॉइंट और गली के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक्सीलेटर पे पैर रख दिया यहां पर आदिल ने। काफी महंगा रहा ये ओवर पायलट सिंह का, काफी रन इस ओवर में बटोरे हैं। आक्रामक होकर के इस ओवर में रन्स बटोरे यहां पर खासकर आदिल ने 3 छक्के और 1 चौका इस ओवर में कुल मिलाकर 23 रन खर्च किए हैं पायलट सिंह ने। बहुत ही बढ़िया उम्दा पारी खेली है अब तक। बात की जाए तो आदिल की अजमेर मेर वॉरियर्स की तरफ से आदिल का साथ दे रहे हैं कप्तान अरिजीत गुप्ता, जो अभी बिल्कुल शांत स्वभाव से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं, खेल रहे हैं। 8 ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेर वॉरियर्स का स्कोर है 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आते ही सफलता, बहुत ही बढ़िया गेंद कप्तान चंद्रबोल सिंह की। जिस विकेट की तलाश थी काफी देर से, अब जाके कप्तान चंद्रबोल सिंह ने वो काम करके दिखाया, अपना कारनामा करके दिखाया है और बहुत ही बढ़िया विकेट लिया, क्लीन बोल्ड किया यहां पर आदिल को और पेविलियन की राह दिखाई और कुछ राहत की सांस यहां पर ली है उदयपुर के खिलाड़ियों ने भी, क्योंकि जिस प्रकार से आदिल बल्लेबाजी कर रहे थे खासकर पिछले ओवर में बिल्कुल खुल गए थे और 3 छक्के और 1 चौका जमा दिया था पायलट सिंह,
जिस प्रकार से बात करते हैं युजवेंद्र चहल की जो इंडिया के लिए गेंदबाजी करते हैं स्पिनर के तौर पर, वैसे ही कोटा के लिए एक युजवेंद्र चहल ही है पायलट सिंह, लेकिन बख्शा नहीं था आदिल ने उस ओवर को। आशीष सक्सेना है नए बल्लेबाज, 12 नंबर की जर्सी उनकी। थोड़ा स्क्रीन के सामने उनको प्रॉब्लम्स हो रही है और अब तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे। वहां पर चंद्रपाल सिंह अच्छी गेंद लाइन और लेंथ के साथ रन लेना चाहते थे, बाहर जरूर निकले, लेकिन जैसे देखा कि फील्डर तेजी के साथ झपट रहे गेंद की तरफ और अपना मन वापस चेंज किया। अच्छी गेंद विकेट टू विकेट लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर चंद्रपाल सिंह। कोई मौका ज्यादा दे नहीं रहे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का या कोई ज्यादा कोई सिंगल लेने का। फिर से अच्छी गेंद, लगातार डॉट गेंद। इस बार ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में, वहां खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, तब तक बल्लेबाजों ने अपना भी छोर चेंज किया। लीजिए एक और विकेट। की ओर में 2 विकेट लेकर के वापस ब्रेक से लगा दी। यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर्स के खिलाड़ियों के रनों पे तुखर लगे हैं और विकेट गिरे हैं, इसका दबाव जरूर बनेगा क्योंकि 2 विकेट एक ही ओवर में। चंद्रपाल सिंह कप्तान खुद उन्होंने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल ली और बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा ये। क्या किफायती ओवर किया उन्होंने। इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया और 2 विकेट ले गए। 9 ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेरू वॉरियर्स का स्कोर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर से पायलट सिंह के हाथ में। जेके पेविलियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नयापुरा कोटा, जहां पर ये रजवाड़ा क्रिकेट लीग या क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग सीजन 7 चल रहा है और आज का दूसरा दिन है। पहला ही मुकाबला है अजमेर मेरू वॉरियर्स और उदयपुर के बीच में ये खेला जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा थ्रो, अच्छा रनिंग बिटवीन द दोनों खिलाड़ियों के बीच में, तेजी के साथ रन दौड़े थे। करंट नेट की बात की जाए तो इस समय 8.33 का और यही रन गति बनती रही तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 167 के आसपास। सर इस विकेट के ऊपर अगर आप 165 और 170 का टारगेट खड़ा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट टीम पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है 170 के आसपास। लेकिन कहीं ना कहीं विकेट बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल है, साथ में जिस प्रकार से आदिल बल्लेबाजी कर रहे थे।
अच्छी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई थर्ड मैन की ओर जा रही है गेंद, कोई फील्डर नहीं, फील्डर पीछे दौड़ जरूर रहे हैं लेकिन मात्र गेंद भर को लाएंगे। बल्लेबाज इस गेंद को खेलना चाहते थे कवर और कवर के बीच में से, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई अब स्लिप लगा दी गई है पायलट सिंह के लिए। एक जैसे ही देखा पिछली गेंद पे वो जिस प्रकार से स्लिप में होते हुए वो 4 रन निकले थे, बल्लेबाज खेलने की कोशिश कर रहे थे ऑफ साइड की दिशा में, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई वो थर्ड मैन की ओर निकल गई थी 4 रनों के लिए। उसके चलते एक स्लिप रखी गई है। बढ़िया बॉल, लेकिन लेग स्टंप पर भटकती हुई गेंद और अंपायर का इशारा वाइड का। बॉलिंग में रनअप में कुछ थोड़ा सा व्यवधान हुआ वहां पर पायलट सिंह को और वापस अपने बॉलिंग रनअप पे चल दिए हैं। आशीष सक्सेना इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन आसानी से दोनों खिलाड़ी पूरा कर लेंगे। ये 10वां ओवर चल रहा है। अजमेर वॉरियर्स ने 83 रन बना लिए हैं। अच्छी गेंद, मिडिल लेग स्टंप की गेंद, शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं। और आजकल ये एक शॉट दिलसान स्कूप शॉट जिस प्रकार से खेलते हैं फाइले की और फील्डर वहां मौजूद हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को रोका बाउंड्री के आसपास, लेकिन बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ भी अपने लगातार छोर चेंज किए। दस ओवर की समाप्ति पर अजमेर वॉरियर्स का स्कोर है 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हाल अंग्रेजी में हमारे साथी कमेंटेटर देवेंद्र जी। Cricket Rajwada Cricket League 2023. Fascinating contest developing. Strong breeze, sun playing hide and seek role. Challenging pitch and a lush green, quick outfield here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. Drawing the batsman forward. He's been absolutely brilliant on the mark, presenting a lot of challenges to the batters. Lovely tossed up delivery, beaten in the flight on that occasion, wanted to play an expansive shot, then decided to play it defensively beaten. Aerially plays through the offside. Men from the deep point will come in and do the fielding, and batters accumulate one more run. This is day number 2, one more match to follow after this. Under lights here at the JK Pavilion Cricket Stadium, Nayapura Kota. Watchfully played away through the offside. He's been bowling a fine length. The batsman struggling to find the right tempo to go about the business of getting runs against him.
Is he willing to charge down the track? Short ball, it's been hammered to the man on the boundary at the long on region for a single. Flat and quick and short in nature. Varying his pace and length expertly. Down the track, straight down the ground. Gorgeous stroke, bouncing away to the boundary for 4, right beneath the side screen. Brilliant footwork. Invitation was there to go down the track. He accepted it gleefully. Was down the track in a flash and decided to get it over the top of the bowler's head and down to the boundary for 4. A handsome stroke down the ground from an elegant right-hand batter. Spinners trying to tighten the screws. Batters trying to find innovative ways, rather orthodox, summoning up the orthodox technique of walking down the pitch and lofting it straight down the ground. A safe shot as far as they're good at getting down to the length of the ball. Fast bowler in operation from the pavilion end is putting the jersey number 4. Slim is quick and is expected to provide a breakthrough here, continuing to pile on the pressure on the batting unit. Ajmer Meru Warriors in the third match of the competition, Adda Rajwada Cricket League 2023. Full toss, it's been worked in front of square on the offside for a single. Mid wicket inside the circle. Tuck the ball away towards that mid wicket fieldsman. Walks in quickly and forces the batter to not go about the business of getting run here. Slammed away straight to the man on the boundary at deep point. Over the top, it's going fine. Has he found the gap? Yes, he has. It's gone for 4. Set spot 4. Airborne, but into the gap through the offside for 4. Third man and point on the boundary. Backward point inside the circle, but he managed to get it over the top and away to the boundary for 4. Beautifully placed. Wheaton, good pace. Hits the deck, gets the ball to bounce. A little bit of deviation as well on the way through to the keeper. Strong comeback from the fast bowler who is rushing in balls in the mult of Ruturaj. Goes over the top. Handsome stroke. Bouncing away to the boundary for 4. Sets for 4. . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4
Marvelous stroke through the offside. An expansive shot. Is not willing to play it along the ground. Is willing to take the risk, and it's paying off at the moment for the better. When the captain has the luxury of spreading the field, he is still managing to identify the gaps or the areas to play airborne shot to get boundaries. Trying to put a respectable total, a competitive total on the board after getting up to a disastrous start, losing 2 wickets early. Partnership building here nicely for Ajmer Meru Warriors. This is the match number 3rd in the RCL 2023, the 7th edition of the tournament. It's bright, it's sunny, it's hot, and it's humid. And there is a strong heat wave across the ground. Taking the pace of the ball, it's been knocked it down the ground for a single. Choosing the right bowler to get the boundaries away, trying to build the tempo. They've been able to generate some momentum in batting department. Looking for a strong finish in the first innings from batting perspective. The bowling has been quite good from the beginning. Fast bowlers and spinners utilizing their natural variations. Looking for that pedal round the corner is bowled. The stump is lying flat on the ground. He was stroking the ball beautifully, trying to up the ante. In the previous over, they've been able to generate a few boundaries. He wanted to play an expansive shot, trying to scoop it down to the fine leg. Just walking across, shuffling across, exposing the leg stump. Ball going on to hit the stumps and taking the leg stump out of the ground. On a wicket fallen at a time where the batting team needed continuous forward press into the batting innings to finish it on a high. सुनो अनस, एक लड़का रखो यहाँ पे जो ये चेयर वेयर, क्योंकि अपना लाइव है मैच इंटरनेशनली, तो इनको हटाए बीच में से, इधर उधर पड़ी रहती, गंदा लगता है. Consolidation job again with the fall of the wicket. Expertly played to the point boundary for a single. The wicket has just fallen. Is he going to carry on with those big shots? Beaten taking the pace of the ball around the off stump, and that's where he's hovering around. He's wearing his pace, seeing the batsman, reading the batsman well, what the batter is willing to do, and then summoning up the appropriate skill, the variation. Who runs through the onside for a single. Trying to tidy his gears, the batter. Giving enough time to himself to activate the subconscious mind as quickly as possible to summon up the natural responses.
playing with a soft hands, wants a run, sent back rightly so. Saw the fieldsman charging in from that region. And that marks the end of the over. A successful one. Let's go down to Mr. Goswami to continue in Hindi. धन्यवाद देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत। और यहाँ पर जिस प्रकार से शुरुआत हुई अजमेर की, उसके बाद में बीच में लड़खड़ाती रही है टीम। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, उसके बाद में लगातार कुछ विकेट्स गिरते रहे। उसके चलते 13 ओवर में 104 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट इस समय 8.00 का। दादेन होगी यहाँ पर उदयपुर टीम के खिलाड़ियों की, जिन्होंने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण और अच्छी गेंदबाजी, खासकर कप्तान ने तो बल्लेबाज यहाँ पर भूपेंद्र यादव। लीजिए, भूपेंद्र यादव ने आती ही सफलता दिलाई, बहुत ही बढ़िया। जैसे भूपेंद्र यादव को गेंद हाथ में थमाई कप्तान ने और आती ही सफलता दिलाई, तो ये छठा झटका लगता हुआ यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर्स को। इस समय एक समय लगा जैसे कि जिस प्रकार आदिल खेल रहे थे, लगातार लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगा रहे थे, लग तो यूं रहा था कि स्कोर काफी बड़ा होगा और ये बल्लेबाज काफी देर तक टिके रहेंगे तो काफी लंबा स्कोर जा सकता है। लेकिन उनके आउट होने के बाद जिस प्रकार से कप्तान ने गेंदबाजी की, एक ओवर में वो 2 विकेट लिए और यहां सफलता मिली है भूपेंद्र यादव को। बहुत बड़े नामी खिलाड़ी हैं भूपेंद्र यादव, रेलवे से खेलते हैं और बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और एक बार फिर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई थर्ड मैन की ओर गई है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण किया, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक सके नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि थर्ड मैन की ओर वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं। हालांकि विकेट कीपिंग जरूर करते हैं, लेकिन आज वो फील्डिंग कर रहे हैं और एक अच्छा क्षेत्ररक्षण कहा जाएगा उनका। काफी लंबी दौड़ लगा रहे थे थर्ड मैन की ओर। हालांकि भूपेंद्र यादव थोड़े से तो नाखुश नजर जरूर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से दौड़ लगा के गेंद को डैम लगा के रोका, उसके बाद में वापस खड़े हुए और थ्रो किया। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सीधा गले में कप्तान चंद्रपोल की तरफ गेंद गई और फील्ड करके थ्रो कर दिया। रन लेने की कोई संभावना है नहीं वहां पर। प्रियांक शर्मा और हितेश केवत दोनों इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अजमेर के लिए। अच्छी गेंद, सीधी रहती हुई बॉल थी और धीरे से खेल भर दिया किसी रन के। बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ इस समय भूपेंद्र यादव का। और इस बार आसानी के साथ खेल दिया पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी से मिल जाएगा दोनों खिलाड़ियों को। 14वां ओवर चल रहा है, स्कोर 110 हो गया 6 विकेट के नुकसान पर।
और इस बार इस गेंद को शॉर्ट फाइनल की ओर खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, फिर भी एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों खिलाड़ी। इसके साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति 14 ओवर की समाप्ति पर 112 रन 6 विकेट के नुकसान पर अजमेर मेरू वॉरियर्स। टॉस जीता यहाँ पर अजमेर मेरू वॉरियर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत में भी 2 झटके लगे। बीच में अच्छी एक शुरुआत हुई थी, आदिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जरूर की थी। उसके बाद चंद्रपोल सिंह कप्तान आए, उन्होंने एक ओवर डाला बढ़िया और उसमें 2 ही विकेट ले गए। फिर से बैकफुट पर धकेल दिया अजमेर मेरू वॉरियर को और उसके चलते अब तक 14 ओवर में 112 रन बने हैं और 6 विकेट भी गंवाए हैं यहां पर अजमेर ने। अच्छा शॉट है, स्क्वायर लेग की ओर गेंद जा रही है, वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी से मिल जाएगा। हितेश केवत और प्रियांक शर्मा इस समय बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाज सदी भी बल्लेबाजी करना चाहेंगे क्योंकि 6 विकेट गिर चुके हैं, अभी भी इनके पास काफी गेंदे ओवर शेष हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर को। बाकी की गेंद सीधी रहती हुई बॉल, अच्छी गेंद और उतना ही बढ़िया अच्छा से सामान दिया यहाँ पर बल्लेबाज ने। बल्लेबाज प्रियांक शर्मा इस समय स्ट्राइक पर हैं और काफी अच्छी सदी हुई बल्लेबाजी। मेघरी आरसीद एक बार फिर ये गेंद, अच्छी गेंद कवर में खेला, कोई रन नहीं। उदयपुर की तरफ से बहुत ही बढ़िया अच्छी गेंदबाजी हुई है, शानदार स्टिक लाइन लेंथ के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी की है, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका दिया नहीं। बीच में जब आदिल बल्लेबाजी कर रहे थे जरूर खुल के खेल रहे थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद रनों पे थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा है अजमेर मेरू वॉरियर्स के खिलाड़ियों को। मेघरे आरसीद दूसरा ओवर डाल रहे हैं, अब तक 4 रन खर्च किए हैं, एक सफलता उनके हाथ लगी हुई है। अच्छी गेंद एक बार फिर कवर्स में, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है, रन लेना चाहते हैं, जोखिम भरा रन था, खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन ऐन वक्त पे अपने पैर वापस क्रीज में खींची। मेघरे आरसीद एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों खिलाड़ी। जेके पेवलियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नयापुरा कोटा में ये रजवाड़ा क्रिकेट लीग बहुत ही बढ़िया चरम उत्कर्ष पे अपने बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से इस गेंद को खेला स्क्वायर की ओर, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद हैं। दूसरा रन बहुत तेजी के साथ पूरा कर लिया, ओवरथ्रो के रूप में भी गेंद जा रही है। अब देखना होगा कि बल्लेबाज जी हाँ एक और रन के लिए दौड़ पड़े हैं। ओवरथ्रोज रन, जोखिम भरा रन हो सकता था, तेज थ्रो था, लेकिन सीधा विकेट कीपर के हाथ में जब तक पहुंचता उनसे भी वो बॉल
चिटकती हुई ओवरथ्रो के रूप में निकल गई थी। 15 ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेरू वॉरियर का स्कोर है 117 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आप सभी का फिर से स्वागत है इस रजवाड़ा क्रिकेट लीग में। भूपेंद्र यादव फिर से अपना ओवर डालेंगे। उनके हाथ में गेंद फिर से कप्तान ने थमाई है। सफलता उनके हाथ लग चुकी है। फील्डर वहां मौजूद हैं। लीजिए, आगे जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे। डिविलियर्स जिस प्रकार से खेलते हैं उसी अंदाज में ये शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, टॉप पे ये गेंद लगी और जो शॉट फाइन लेग का जो फील्डर अंदर था 30 यार्ड घेरे के अंदर ही, उन्होंने आसान सा कैच वहां पे लपक लिया। तो भूपेंद्र यादव ने एक और सफलता दिलाई यहां पर अपनी टीम को। और इस समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों से नजर आ रही है। इस समय मेरू वॉरियर्स लगातार उनके विकेट गिरते रहे हैं। हालांकि आज का विकेट नया विकेट है, लेकिन जिस प्रकार से कभी विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल दिखता है तो कभी गेंदबाजी के लिए, लेकिन भूपेंद्र यादव ने एक और सफलता यहां अपनी टीम को दिलाई है। ये देश के बाद आउट हो चुके हैं। गेंद गई है थर्ड मैन की ओर, वहां से फील्ड करके नरेंद्र सिंह तोमर ने गेंद को पहुंचा दिया विकेट कीपर की तरफ। एक रन आसानी से पूरा किया। पार्टनरशिप बिल्ड करने की जो बात काफी देर से चल रही थी, अभी तक वो नजर आई नहीं है। लगातार विकेट्स गिरते रहे हैं। फिर से अच्छी गेंद, बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव की ज्यादा विकेट लेने की कोशिश रहती नहीं है। वो लाइन और लेंथ जो है वहां वो अपनी गेंदबाजी करते हैं और वहीं उनको विकेट अपने आप मिल जाते हैं। एक बार फिर हवा में है, उस और फील्डर आ रहे हैं, लेकिन उनसे कहीं पहले गेंद टप्पा खा गई। एक और जोखिम भरा शॉट यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर के खिलाड़ियों के द्वारा। आज जब मैच शुरू हुआ, और लीजिए एक और विकेट यहां पर। बल्लेबाज को कुछ आता पता ही नहीं चला, कहां उनकी नजरें थी, कहां गेंद आ रही थी, अंदर आ गई और बल्ला कहीं गेंद कहीं। और इस तरीके से 8वां झटका लगा। एक और सफलता दिलाते हुए भूपेंद्र यादव, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था अजमेर मेरू वॉरियर्स ने, लेकिन वो जो फैसला शुरू में, हालांकि आदिल एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने संघर्ष भी किया, रन्स भी बनाए, अटैकिंग बल्लेबाजी भी की,
लेकिन बाकी के बल्लेबाज कुछ ज़्यादा धैर्य के साथ खेल नहीं सके, उसके चलते अजमेर वॉरियर्स के 8 विकेट गिरे हैं अभी तक। ये चलवाते रहना ना। क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग सीजन 7 इसका पूरा श्रेय जाता है। बढ़िया गेंद। हम बात कर रहे थे कि रजवाड़ा क्रिकेट लीग का पूरा श्रेय ये जो हमारे इस आरसीएल के चेयरमैन साहब हैं जनाब आमिन पठान साहब, उनका हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रखा है खिलाड़ियों को। एक बार फिर अच्छी गेंद, बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। और इस लीग में खेलने वाले काफी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी हैं, आईपीएल प्लेयर्स भी हैं, और 2016-17 जो यहाँ पर खेले थे कुछ खिलाड़ी, उनमें आज एक बार फिर बढ़िया गेंद। राजस्थान के लिए भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं, और अपने भारतीय टीम में भी वो खेल चुके हैं। तो ये जो पूरा श्रेय है वो जनाब आमिन पठान सर को जाता है, जो आरसीएल के चेयरमैन साहब हैं। अच्छी गेंद, लाइन लेंथ के साथ बढ़िया गेंदबाजी चंद्रपोल के द्वारा। लगातार सीजन करवाते रहे हैं और काफी बढ़िया यंगस्टर को मौका मिलता रहा है यहाँ पर। एक बार फिर अच्छी गेंद। खैर क्रिकेट में तो खिलाड़ियों को मौका मिलता रहा है, लेकिन यहाँ पर कोटा के जो जितने भी दर्शक आते हैं उनका भी एंटरटेनमेंट, चाहे वो चीयर लीडर हो, चाहे वो हमारे जो सितारे हों जिनको हम टीवी पे देखते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, ये अच्छी गेंद, लगातार बढ़िया गेंदबाजी। जनाब आमिन पठान साहब जो आरसीएल के हमारे चेयरमैन साहब हैं, नेक इंसान है, बहुत ही बड़े वो इंसान। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कई खिलाड़ियों को यहाँ पर खेलने के, जो आज राजस्थान खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए भी खेल चुके हैं, लेकिन वो इस धरती पर जरूर खेल चुके हैं, और वो भी रजवाड़ा क्रिकेट लीग में। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सत्रह ओवर की समाप्ति पर अजमेर वॉरियर ने 120 रन बना लिया, 8 विकेट के नुकसान। पायलट सिंह के हाथ में इस समय गेंदबाजी है। और आगे का आंखों देखा हाल अंग्रेजी में हमारे साथी कमेंटेटर देवेंद्र जी। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, और इस समय मौका है पायलट सिंह के पास भी, वो अच्छी और लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी, और विकेट लेने का भी बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। अच्छी गेंद, कवर्स में खिलाड़ी वहां मौजूद, रन्स को मिलेगा नहीं। ये 18वां ओवर चल रहा है।
120 रन बने हैं, 8 विकेट खोए हैं। इस बार शॉर्ट बॉल, इसको खेल दिया मिड विकेट की और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, चौका। एक छोटी गेंद, खराब गेंद, जिसका बल्लेबाज भरपूर फायदा उठा रहे हैं यहां पर अभिषेक मिश्रा, जिनके बल्ले से अच्छा चौका निकला है। और इस बार बढ़िया कमबैक किया यहां पर पायलट सिंह ने। तो हम बात कर रहे थे इस रजवाड़ा क्रिकेट लीग की। ये अपने आप में बहुत बड़ी लीग है। ये अपने देश में तो हर कोई जानता है, विदेशों में भी इस लीग की पहचान है। अगली गेंद कट किया गली में, फील्डर मौजूद हैं, रन नहीं मिलेगा। बहुत बड़े बड़े नामी प्लेयर्स यहां खेल चुके हैं और यहां से खेलने वाले काफी खिलाड़ी आईपीएल्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग, उसमें भी खेल चुके हैं और खेल रहे हैं। तो ये जो आरसीएल जो लीग है, यहां से प्लेटफॉर्म ये यहां से तैयार हो रहा है। ये जरूर जूनियर खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है और यहाँ से अपनी जो काबिलियत है, हुनर है, वो यहाँ से दिखाएंगे और वो आईपीएल्स और भारत के लिए भी खेलेंगे। राजस्थान के लिए तो खैर खेल ही रहे हैं और उसका पूरा श्रेय आरसीएल के चेयरमैन आमीन पठान साहब, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब तक ये डे के अंदर ही खेला जाता रहा है आरसीएल, लेकिन इस बार डे नाइट के अंदर खेला जा रहा है। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत नजारा यहां पर। सीधा शॉट, सीधे बल्ले से मिड ऑफ ऊपर रखा गया है। थोड़ी सी कीपर से मिसफील्ड हुई, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना के यहां पर अभिषेक मिश्रा और समी उल हक इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। 19वां ओवर इस समय प्रगति पर है। 126 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर। सीधा गली के अंदर, कोई यहां पर गलती नहीं। निखिल शुक्ला ने अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई। यहां पर 9वां विकेट गिरता बैट्समैन मेरू वॉरियर्स का। लगातार विकेट गिरते रहे हैं, उसके चलते रन्स पे भी ब्रेक लगे हैं और विकेट खैर वो तो जाते ही रहे हैं। टॉस जीता था और चाहते थे कि यहां पर कम से कम 150 160 का जो स्कोर है वो खड़ा जरूर करें अजमेर मेरू वॉरियर्स का, लेकिन अभी भी 126 रन ही बने, 9 विकेट खो दिए हैं। वो एक ही ओवर में 2 विकेट लेना कप्तान चंद्रपॉल सिंह का, और उसके बाद भूपेंद्र यादव के 3 विकेट, और उसके बाद ये निखिल शुक्ला के भी 3 विकेट। इसके चलते यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर्स बिल्कुल बैकफुट पर नजर आई है। अब लास्ट जोड़ी बीच मैदान में है। 126 रन बने हैं, मात्र 9 विकेट खो दिए हैं। ये 19वां ओवर चल रहा है। लेग स्टंप पर अतिरिक्त करने की कोशिश यहां पर गेंदबाज के द्वारा, वाइड का इशारा।
अच्छी गेंद, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। अंतिम जोड़ी इस समय खेल रही है अजमेर वॉरियर्स की। किफायती गेंदबाजी उदयपुर की तरफ से। बढ़िया गेंद, लेकिन सीधे बल्ले से नीरज जोशी ने आराम से इस गेंद को खेल दिया। अंतिम जोड़ी मैदान में है। टीम अजमेर वॉरियर्स रन भी बनाना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ होता प्रतीत नजर नहीं आ रहा। इस बार बढ़िया गेंद, बल्ला चला दिया था, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। भाग्यशाली रहे नीरज जोशी की बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। निखिल शुक्ला बढ़िया गेंदबाजी की है उन्होंने, 3 सफलताएं उनके हाथ लग चुकी हैं। और इस बार बढ़िया गेंद उछाल लेते हुए बाहर की ओर निकलती हुई, इसके साथ यहां पर ओवर की समाप्ति। 19 ओवर की समाप्ति पर अजमेर वॉरियर का स्कोर 127 रन 9 विकेट के नुकसान पर। जैसे जैसे दिन ढलेगा और ढलता जाएगा सूरज अपने बादलों में, जैसे ही वो पश्चिम की ओर छिप जाएगा, तब जाकर के ये दूधिया रोशनी इस स्टेडियम में नहाया होगा ये स्टेडियम। और पहली मर्तबा ये डे नाइट रजवाड़ा क्रिकेट लीग हो रही है। भूपेंद्र यादव के हाथ में गेंद है, और जैसे ही भूपेंद्र यादव के हाथ में गेंद थमाई थी कप्तान चंद्रपॉल ने, उसके बाद लगातार वो विकेट लेते रहे हैं। कप्तान के भरोसे पर बिल्कुल खरे उतरते हुए भूपेंद्र यादव। अब बढ़िया गेंद, भारी किनारा, नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। अंतिम ओवर चल रहा है, बल्लेबाज तो बल्ला चलाएंगे ही। गेंदबाजी उस तरह की हो रही है। इस बार कट किया गली में, रन लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मना किया यहां पर अभिषेक मिश्रा ने। अगर कुछ रन्स यहां इस ओवर में बटोर सकते हैं तो वो है अभिषेक मिश्रा, और दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव। किफायती गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। छोटी गेंद, पुल करने की कोशिश। अब तक बल्लेबाज को एक तरीके की वो गेंद खिलाई नहीं है भूपेंद्र यादव ने, उसी एक लाइन लेंथ पे खिलाई नहीं है। जानते हैं कि अंतिम ओवर है, बल्लेबाज स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे। आ गया स्टेट द ग्राउंड, खेला है इसको बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार क्षेत्ररक्षण स्टेट में, लेकिन 2 रन बहुत तेजी के साथ दौड़कर पूरे किए यहां पर अजमेर वॉरियर्स ने। लंबा है, सीधा शॉट है, स्टेट द ग्राउंड खेला है, और ये अंतिम बॉल, बहुत ही बढ़िया शानदार छक्का यहां पर। आगे की गेंद थी, 2 कदम अपने बाहर निकाले, और क्या खूबसूरत इस शॉट को खेला। स्टेट द ग्राउंड छक्का लगाए यहां पर अभिषेक मिश्रा ने। इस पहले इनिंग की अंतिम बॉल लेकर के भूपेंद्र यादव।
अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल का, नो बॉल। और इस नो बॉल के चलते अब स्कोर बढ़कर 140 रन हो गया है 9 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पर अजमेर मेरू वॉरियर्स के लिए अंतिम जोड़ी के रूप में अभिषेक मिश्रा। हालांकि 14 गेंदों में 19 रन जरूर बनाए हैं। टीम के लिए ये अच्छा कहा जाएगा कि अंतिम अच्छी यॉर्कर, बढ़िया यॉर्कर के साथ यहां समाप्त। दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े हैं और यहां पर अपील हुई है रनआउट की और थर्ड एम्पायर की तरफ गए हैं। अंपायर का इशारा कि वो रनआउट देखेंगे कि है कि नहीं। अंतिम बॉल थी, यॉर्कर लाइन लेंथ की गेंद थी जिसको संभाल लिया था वहां पर अभिषेक मिश्रा ने। एक रन के लिए तो दौड़ पड़े थे, दूसरा रन लेने के लिए भी वो दौड़ पड़े थे और थ्रो जाके डायरेक्ट हिट लगा था। उस समय क्या बल्लेबाज क्रीज में पहुंच चुके थे? और यहां पर रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ ऑल आउट होती हुई अजमेर मेरू वॉरियर्स।
हेलो Hello. Udaipur Mewar requiring 142 to win from the allotted 20 overs. On a surface where there is something available for the spin bowlers and fast bowlers, with inconsistent pace and bounce, it is going to be a riveting contest ahead of us. A lot will depend on how they score against the fast bowlers, especially in the first 6 overs, to determine the chase for the team Udaipur Mewar Warrior Royals. Ajmer Meru Warriors winning the toss and deciding to bat first, posting 141 all out within the allotted quota of 20 overs in the chase. The start is going to be crucial. Will they be able to find early breakthroughs that will alter the course of the action? Clouds developing in the skies, sun is hiding behind, and slightly better conditions for the players to experience. Not much of heat that we experienced when we arrived on the ground. It was hot and humid, intolerable for the players, but now quite soothing on this lush-green outfield on a challenging pitch. The opening pair has arrived on the ground. Narendra Singh Tomar and Saket Sharma, the opening combination. Narendra Singh Tomar has the reputation of playing attacking brand of cricket. Someone who is very, very explosive with his stroke play. Will he change his approach today on a pitch where there will be some help for the fast bowlers early on? Sami ul Haq to operate from the far end to begin the proceedings. They got slip in position. Third man is patrolling on the boundary, man at the backward point, at the cover point position. Extra cover and mid-off on the offside, mid-on, and a man at the square position on the boundary on the onside. And fine leg is up in the circle. 2 men patrolling on the boundary at the third man and at the square position on the onside. All in readiness for the resumption in play in the second innings. Cuts away over the top of point and down to the boundary for 4. Width given, capitalized, big time. Trying to concentrate around the fourth stump. Width given, taken care of. This time around, ball keeping low, just pushing it with the soft hand and taking a single. Off the blocks quickly. Is he going to come back for the second on the overthrow? He decides to not come. Sun breaking through the clouds, cotton light, which is developing into slightly darker in color, and artificial light is also coming on. It has become quite bright with buses passing by not far away from the bus stand that connects Kota to different parts of the country on this education hub. Sweetly driven straight to the man at the cover point position. Sunlight's gleaming through. The dropping sun is still quite powerful to have that burning sensation on the fieldsmen who are fishing, especially those who are fielding at the point position. It's coming straight into him.
Pushed away straight to the man, bit of fumble. It's a good comeback after conceding that boundary of the very first delivery in the chase, where he dropped it short, width was given. They had two fieldsmen in position at backward point and at the point position, but decided to take it over him, to play it over, just throwing his bat onto it. The timing was immaculate and ball traveled to the fence in a jiffy. Punched away off the back foot straight to the man hovering around in the cover region. Great comeback, just making shift. The length has been similar, only the line around the off stump rather than at fifth stump where he conceded a boundary in the first over. Is he searching for that full length delivery that takes the outside ace? Goes over the top of the cover point for 4. 2 boundaries from the over. First and last ball of the over, going for boundaries. First and last ball of the first over being dispatched for the boundary for similar mistakes. One in front of point, in front of square on the offside, one slightly behind on the offside. Different contact points, but similar results. 2 airborne shots with an element of risk, but thrust to the boundary for 4. First ever day-night cricket event here on the soil of Kota in the history of the game, expanding around 141 years. This is for the first time they're hosting a day-night tournament on this multi-purpose JK Pavilion International Cricket Stadium, which is used for playing football as well, athletics and some other sports. A lot of academies coming around the ground, few trees in the backdrop as well. It's an open stadium, low stands. Remember coming here in the year 2017 and describing the RCL. Used to be a packed ground, but those were different conditions in the month of February 2017, but it's very different now. In the month of June, it's very, very hot and humid. We will expect more people with the sun dropping down. Hits him on the pad, not rising to the expectation of the batsman on that occasion. He got men at the square position on the boundary, on the onside, third man on the boundary for an explosive right-hand batter who has got the reputation of setting the tone with aggressive streak of strokes. The brilliant stroke maker, plays with a lot of freedom. He's been able to keep his fitness for many years, if I could remember. Tomar gets a short ball and it dispatches towards the mid-wicket region. The fieldsman fraction shot and played with immaculate timing on that occasion, with men at the square position was barely 4 to 5 yards away, not far away, but it took full advantage of that short lifting delivery and thumped it to the mid-wicket boundary for 4. That was some shot with a tremendous power, and the timing was spot on from Tomar. He's tonking the cricket ball really well. More changes inflicted in the field. Third man comes up in the circle. Man at the mid-wicket position inside the circle has been sent on the boundary. Exactly the location where he found the previous boundary. Is he going to deliver similar kind of ball? Is he thinking about pitching up and doing something different? From over the stumps, he's a tall man, goes up and is bowling to Tomar, and Tomar is getting a lovely delivery, edged away, down to third man for 4. Not in control of the stroke.
fraction shot just around the off stump, taking the shoulder of the bat and going fine, no slip in position at a time. Where they're conceding boundaries, they needed a wicket in some fashion, looking to plug the gap, but he's not using the gaps, he's hitting it over the top to get the boundaries. Runson is a tall man and scoring to Tomar, and Tomar is getting full delivery, goes over the top, fielder on the boundary, can't get there, and it's just gone away to the boundary for 4. He's leathering this cricket ball very, very hard. Powerful batter, showing his intentions, playing some controlled, lofted shots, and it's yielding him boundaries, which is putting pressure back on the opposition. What's going to be the response from number 13? Full delivery and driven aerially into the gap on the onside. Late realization from the fieldsman. He can't get there. It's gone for 4 more. Continuing to struggle, looking to take the pace of the ball. Didn't time it from the center of the blade, just coming in from the toe end of the bat, but was hit in the gap. Sun was coming through straight into his eyes, so could not make a judgment on the boundary. Late realization from the fieldsman at the mid-wicket position, and it went away to the boundary for 4. It's hemorrhaging runs here at JK Pavilion Cricket Stadium in Kota. Tomar is in tremendous form. Oh, he's beaten outside the off stump. Dot delivery to finish in a very, very expensive over. 25 without loss after 2 overs. Udaipur Mewad Royals off to a blistering start, courtesy Narendra Singh Tomar. 21 of just 8 deliveries with the help of 5 fours. This reminds me the kind of start that India got against Pakistan at the Centurion Park ground in South Africa in the 2003 World Cup epic clash where India took on Pakistan. Tendulkar could not sleep for 12 nights in order to mentally be there and win the game for India. That's how he started. He got 20 of 8 against Shoaib Akhtar and Wasim Akram and company. This is some start. High quality attacking strokes from Tomar, and has set the tone in the chase for the team Udaipur. Basically from Kota, very well aware about the conditions here. They skewed the pitches for this tournament. A special team from Jaipur arrived to prepare the pitches and outfield. Works through the onside. That's a good strategy. Just feeding the strike back to Tomar. Saket Sharma is betting on 5 with its single and 26 without loss. We are into the 3rd over in this balmy, hot and humid evening here in Kota. Driven coming from the toe end of the bat to the man at the mid-on position. It was a topsy-turvy beginning for the team. Ajmer Meru Warriors winning the toss, batting first. They lost 2 wickets early, then good consolidation period where Adil and Arjit Gupta tried to bail the team out of the trouble situation. Airborne over the top of cover. The timing is absolutely marvelous. That's gone for 4. Pure timing.
There was an element of risk, but such was the confidence of the batter. He timed it beautifully over the top of cover. They needed certain monocle or green to take the catch. Width given, cramped him for room. Was searching for some width outside the off stump. It was short, but wasn't far away to play the cut shot, and he's delayed it short, and hence he's been beaten with a delivery which was slightly coming slanting back into the right and better around the off stump. Will he continue to play attacking shots? Deep square is waiting for potential opportunity. And so is the man at third man on the boundary. They don't keep sleep when he's batting. Goes over the top, in the air, away from that fielder. It's gone away to the boundary for 4. What a start in the chase. 34 without loss. Last ball of the third over coming up. More changes. Wicketkeeper in consultation with the fieldsman on the boundary at the point position. Shot and pulled away into the gap on the onside for 4 more. Narendra Singh Thoma is running away at the moment with his stroke making 33 of just 13 deliveries with the help of 8 fours. Saket is batting on 5 for 5 with 1 4. After 3 overs, Udaipur Mewar Royals enjoying the batting royalty from Thoma in particular. What a start, delightful start. The tournament is just kicking off, it seems. The opening day was bit circumspect coming into the competition, but now since he has realized how the pitch is playing and is willing to take charge on the surface where there is certainly something available, such is the ferocity of the intent of the batsman. The bowlers are finding it difficult. He's getting into the mind of the bowler and certainly creating the peace in mind. Brilliant, delightful stroke play from Thoma so far. Abhishek Mishra went for 16 and Samiullah conceding 22 in his 2 overs. Seems there is going to be change in bowling. Neeraj Joshi, 6 wickets, 2 wickets in 6 matches for him. Sporting the jersey number 2. Artificial light also taking full effect here. Saket has strike 5 of 5 here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. As Meru Warriors, they know that they need a wicket in some fashion to break this partnership, to break the rhythm. Thomas' wicket holds the key in this game for Ajmer Meru Warriors to stage a comeback. Good start to the spell. That's the length that it should be targeting more often than not. And attack the stumps when there is invariable bounce. You can get the batsman out, LBW, you can get the batsman out in sneaking through bat and pad. At times the ball is staying low. That's where they can explore their opportunities of taking wickets. Joshi to sack it. And he's clipping the ball away towards the man at mid-on, who had to move to his right hand side to do the fielding. Single taken. Good thing. Thinking from Saket, feeding strike back to the batsman who is enjoying batting fluency at its peak. Wonderful entertainer over the years.
certain batsmen who don't fear much. Virendra Sehwag in the early years playing for India. Jayasuriya, Kalu Vitarana. Tomar Poles not quite getting the timing. Luckily it's landing away from that fieldsman at the square position on the onside. Good lines. It's not giving width. Is bowling around the off stump. This has been very good over so far. Looking to put the brakes on the opposition. Neeraj Joshi. 2 wickets so far for him in the RCL in six appearances. A breathtaking start in the chase for the team Udaipur Mewar Royals. Batting royalty from Tomar. He is on strike at the moment. Full delivery clipped away. Straight to the man at mid-wicket. The catch is taken. A soft dismissal. Neeraj has taken the wicket. Caught at mid-wicket. A soft dismissal. Wanted to flick it through the onside. It went straight into the hand of the fieldsman at mid-wicket position. Saket the batsman out for 6. It is 1 wicket down for 40. Udaipur Mewar Royals. Where Narendra Singh Tomar is working magic with the bat. 34 of 14. With a strike rate, very, very imposing strike rate of 242. He is stroking it and stroking it delightfully well. To the delight of the spectators. Sparse crowd so far. This crowd building with sun dropping down. Slightly easier conditions for the spectators to travel and arrive on the ground, as we can see. Crowd filtering in from different parts of the stadium, the ground here in Kota. In a deep square on the boundary, third man on the boundary for the new batter. Parishik Jangir, the new batter. Nudges it down to third man. He's played it fine. Fine enough for 4. Using the pace and angle. Get down. Educated age. Bowlers might think that he has some psychological advantage there. Batsmen would think it was well controlled glide down to third man for 4. The third man wasn't far away. Edged away, it's going fine. It's gone away to the boundary. It's gone certainly beneath the side screen for 4. Four overs have been bowled in the chase. Udaipur Mewar Royals showing a batting royalty courtesy Narendra Singh Tomar. 1 wicket down for 48 in 4 overs. Will they be able to maintain this momentum or not? Will there be any change with change in field? Certainly after the power play. It's Suresh Goswami to describe the action in Hindi. धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। तो यहाँ पर टॉस जीता था अजमेर मेरू वॉरियर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 141 रन बना, 142 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन उदयपुर की टीम 4 ओवर में ही 48 रन बना चुकी है। उसका पूरा श्रेय जाता है नरेंद्र सिंह तोमर को, जिन्होंने 14 गेंदों में 34 रन बना लिए हैं।
हेलो 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 शॉट बहुत ही बढ़िया खूबसूरत शॉट और इस शॉट के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 56 लॉस ऑफ 1 विकेट उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स। ये पांचों और चल रहे हैं और धमाकेदार पारी की शुरुआत यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा 17 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है, 42 रन बना लिए हैं जिसमें 10 शानदार स्ट्रोक यानी चौके। और एक बार फिर इस बार स्क्वायर लेग और जो मिड विकेट के एरिया उसके बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर को रोकना इतना आसान नहीं है। 18 गेंदे 46 रन 11 चौके। जब एक बार इनकी आंखें जम जाती हैं तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं ये बल्लेबाज। कुछ इसी अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। सोहेल खान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद और फिर से आगे आए, फिर से इस गेंद को मिड विकेट की ओर खेला, मिसफील्ड, लेकिन 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। एकमात्र विकेट जो गिरा है वो साकेत शर्मा का गिरा, जिन्होंने 8 गेंदों में 6 रन बनाए। उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर, उनका ही बल्ला लगातार आग उगल रहा है। ये गेंद आगे की गेंद कट किया पॉइंट की दिशा में, लेकिन सीधे फील्डर के पास बिना किसी रन के। 5 ओवर की समाप्ति में उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स का स्कोर है 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 61 लॉस ऑफ 1। रिकॉर्ड रन रेट की बात करें तो इस समय 5.40 का मात्र अब चाहिए। करंट रन रेट तो 12.20 का इस समय चल रहा है। 90 गेंदे 81 रन 81 रन। गेंदे काफी हैं, रन कम से, और क्यों ना हो 19 गेंदों में 47 रन जो बना के खेल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अजमेर मेरू वॉरियर्स के लगातार बीच में विकेट गिरते रहे और जो स्कोर कार्ड वो लगाना चाहते थे बोर्ड पर 160 170 का, वो लग नहीं पाया। छोटी गेंद, पुल शॉट खेलने की कोशिश, मिड विकेट के सीधे फील्डर हाथ में। नरेंद्र सिंह तोमर ने मना किया, किसी भी रन लेने की कोई संभावना है नहीं वहां। यह पावर प्ले का छठा और अंतिम ओवर चल रहा है। नीरज जोशी की यह गेंद, अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के पास। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन बस यही शैली है इस बल्लेबाज की, लगातार वो बल्ला चलाते रहते हैं। तारीफ करनी होगी नीरज जोशी की, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की अब तक नरेंद्र सिंह तोमर के सामने। यह गेंद और उठा दिया इसको मिड विकेट के ऊपर से। एक और शानदार शॉट।
काफी देर से ट्राई कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर, इस बार उनकी रेंज में थी ये गेंद, और रेंज में थी तो निश्चित तौर पर बाउंड्री के बाहर पहुंचाना ही था उस गेंद को। 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। फुल टॉस फाइनल लेग के ऊपर से Get down. मात्र 23 गेंदों में 57 रन बना लिए हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने, जिसमें 12 चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी शामिल है। खुल के खेल रहे हैं, धमाकेदार पारी खेल रहे हैं यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर। और फिर से कट किया इसको थर्डमैन की ओर, वहां फील्डर मौजूद हैं, एक रन आसानी से मिल जाएगा। यूं कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जो भी जब भी भारतीय टीम के लिए वो ओपनर में उतरे थे ऐसे ही बल्लेबाजी करते थे जिस प्रकार नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं। कुछ उसी अंदाज में वो शॉट भी खेलते हैं। नीरज जोशी की गेंद स्टेट द ग्राउंड, फील्डर उसके पीछे दौड़ जरूर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पावर प्ले समाप्त, 6 ओवर समाप्त। यहां पर 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 76 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 6 ओवर। उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स बहुत तेजी के साथ अपने लक्ष्य से जो जीत है उसकी ओर बढ़ रही है। 84 गेंदों में मात्र 66 रन चाहिए और 9 विकेट उनके हाथ में हैं। और खतरनाक बल्लेबाज उदयपुर की तरफ से जो खेल रहे हैं, आग उगल रही है उनका बल्ला। 24 गेंदों में 58 रन बना लिए हैं। ये रजवाड़ा क्रिकेट लीग जो है सीजन 7 है। जितने भी सीजन हुए हैं ये आमीन पठान सर जो हैं आरसीएल के चेयरमैन होने की देन है, और उनकी देन के साथ साथ यहां से काफी सितारे उभर कर निकलते हैं जो राजस्थान खेलते हैं, आईपीएल खेल रहे हैं और भारतीय टीम में भी खेल रहे हैं। छोटी गेंद कवर के बीच में से कोई फील्डर मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। Get low when the whistle goes. बात की जाए चीफ लीडर हो इस ग्राउंड में, एंटरटेनमेंट में अगर बात करें और सितारों की बात करें जिनको टीवी पे देखते हैं लेकिन अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, अब वो भी श्रेय आरसीएल के चेयरमैन जनाब आमीन पठान को जाता है। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जितना इंटरनेशनल लेवल है वो इस कोटा की धरती पे वो दिखा रहे हैं सबको। सोहेल खान की यह गेंद कट किया फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, फील्ड कर लेंगे। 1 रन आसानी से दौड़ते हुए पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। तेजी के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रही है यहां पर उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स की टीम। इस बार कट किया कवर में, फील्डर मौजूद, रन लेने की कोई संभावना है नहीं वहां। 5 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रीसेक जांगिड़ और 27 गेंदों में 63 रन बना लिए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने सीधे बल्ले थे स्टेट द ग्राउंड,
और बढ़िया फील्डिंग, तीसरी मर्तबा जाके उस गेंद को पकड़ा वहां पे फील्डर ने और थ्रो किया। स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री पर, मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हैं। बाकी सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर हैं। और इस बार डीप मिड विकेट की ओर गेंद गई है, वहां खिलाड़ी मौजूद, तेजी के साथ दौड़ते हुए गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। एक रन आसानी से पूरा किया। 7 ओवर की समाप्ति, उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स का स्कोर 84, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो हम बात कर रहे थे रजवाड़ा क्रिकेट लीग की। जनाब आमीन पठान सर ने लगातार इस लीग को बेहतर से बेहतर बनाया है और इस बार तो आप डे नाइट यहां खेल भी रहे हैं और खेलने वालों को देखने वाले देख भी रहे हैं। पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। और उसके साथ साथ जो हमारे सितारे यहां मौजूद स्टेज पे आएंगे उनको देखते रहेंगे आप अपनी आंखों के सामने। रजवाड़ा क्रिकेट लीग सीजन 7 का आज का दूसरे दिन पहला मुकाबला चल रहा है यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर्स और उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। अंदर आती हुई गेंद बैक पर जाके शानदार तरीके से इस गेंद को लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में खेल दिया। वहां खिलाड़ी मौजूद, एक रन आसानी से पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। नरेंद्र सिंह तोमर खेल नहीं रहे हैं बल्कि गेंद के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। 28 गेंदों में 64 रन, 13 चौके और 1 छक्का शामिल है उस पारी में। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी धुआंधार उन्होंने बल्लेबाजी की है। सीधा शॉट है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण। प्रियांक शर्मा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट वही है, स्क्वायर लेग है, मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। कवर का जो फील्डर है उनको बिल्कुल बाउंड्री पे भेज दिया गया है। और पैड लाइन की गेंद स्क्वायर लेग की ओर खेल दिया आसानी के साथ और बिल्कुल आराम से चहलकदमी के साथ धीरे धीरे रन लेते हुए दोनों खिलाड़ी। शुरू के पावर प्ले में जितना फायदा उठाना चाहिए था वो फायदा उठाया यहां पर उदयपुर के बल्लेबाजों ने। और लीजिए एक बार फिर मिड विकेट की ओर खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं बल्लेबाज, उनका बल्ला ऐसे ही चलता रहता है, वो खामोश नहीं रहते और उनका बल्ला काफी देर तक खामोश रहता भी नहीं है। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई। ये ओवर प्रियांक शर्मा का बिल्कुल अच्छा जाता हुआ इस समय अजमेर की तरफ से अगर देखा जाए तो। जेके पेवलियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नयापुरा कोटा में ये क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग 2023 सीजन नंबर 7 चल रहा है। डे नाइट ये रजवाड़ा क्रिकेट लीग आपको देखने को मिल रही है। इस
इसके साथ ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स का स्कोर है 89 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजमेर मेरू वॉरियर्स ने टॉस जीता था। पहले बल्लेबाजी की निर्धारित अपने 20 ओवर में 141 रन पर ऑल आउट हुई थी। अजमेर मेरू वॉरियर्स की तरफ से आदिल ने 48 रनों का योगदान दिया। संजय भारती के हाथ में गेंद है और सामने नरेंद्र सिंह तोमर हैं। लीजिए उठा दिया है उसको डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन गगन चौंबिच्छा का। जब भी उनका बायां पैर जमीन पे होता है तो बड़ा शॉट खेलने के लिए जाते हैं। एक बार फिर उसी अंदाज में इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और 6 रन। एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छोटी गेंद। नरेंद्र सिंह तोमर ना ही तो डीजे साउंड को रुकने दे रहे हैं, ना ही आप रुक रहे हैं। उनका बल्ला गेंद आसमान का सैर कर रही है लगातार हवा में। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। जल्दी मैच खत्म करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ऑफिशियल टॉस फिर सीधे बल्ले से स्ट्रेट द ग्राउंड खेला है, कोई मौका नहीं किसी के पास। 4 रन। चलिए आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर इंग्लिश में अंग्रेजी में सुनाएंगे देवेंद्र जी। Thank you, Suresh. This has been quite a foundation to win this game for the team. Udaipur Mewar Royals is stroking along nicely, 112 for 1. And a breathtaking innings from Narendra Singh Tomar, who is batting on 88 of just 35 deliveries with the help of 14 fours and 4 sixes, with an astonishing strike rate of 251. And Parishek is giving him good company, 18 of 11 with the help of 3 fours. Outstanding batting display in the chase.
Looking to restructure the field there. Jangid is on 22 of 12. Will he be able to get 100? Narendra Singh 88. And hits through the onside. Will be run there. Men coming in from the boundary at the long on position. Takes a single, feeds a strike back to Narendra Singh Tomar. Tremendous batting display today. Boundaries a galore. It's raining sixes here in Kota. The education hub, great entertainment for the crowd. It's building up nicely for the evening match. The match number 4 of the competition. Tomar has a strike. Tomar tonks it through the onside. They got the fielder there on the boundary. Two fieldsmen converging. Men from the long on position, or rather the mid-wicket position, goes to his right hand side, and there's the fielding single taken. Went hard at the ball rather than looking to time the ball or place the ball into the gap on the onside. Jangid on 23 has a strike now. Down the track and slammed it beautifully into the gap on the onside between mid-wicket and long on for 4. To win from 62. Tomar has 89. Parishek Jangid 27 of just 14. Two batters willing to take the opposition attack down to pieces. This time he turns the ball away in the onside. The bowler will go on his onside to do the fielding. Single is taken now on 89. Narendra Singh Tomar. 1, 2, 3 for 1. We are into the 10th over. Last ball of the 10th over. Is he going to go for a big booming boundary? More changes in the field inflicted. Men at long on and long off in position. Goes up and is bowling to Tomar this time. Swings it hard. It's going fine. It's wide. It's gone away to the boundary for 4. 4 extras. $14 more runs required to win from 60 balls, or rather 61 balls. Tomar 89. Will he get a century? 11 required for him, 14 to win. Parishek. This time he turns the ball away on the onside and will take a run here. Oh, it's gone for 4. He's a 93 of 37. Tremendous batsmanship. The required rate is just 1 run per over to win. Halfway stage in the second innings. Quite a batting display from Tomar in particular. A brilliant half century into the 90s now, 93. Can they finish the game in this over? Will he get the first century of the RCL 2023? This is only the second day in Rajwada Cricket League 2023, the 7th edition of the tournament. And Narendra Singh Tomar is lighting up the play with amazing stroke play. He's a non-strike at the moment. He's going to feed the strike back to Tomar. What a day is going to culminate if he gets to a century. Punch down the ground. Man at the long on position in position at the moment, so we'll take a single. Tomar is back on a strike. He has 93 runs against him.
They need 9 more runs to win. He needs 7 for his century. How many deliveries he will take to get there? Will he get there with 4 or 6 or 6-6? More changes. Takes his time. He comes in from the far end. Into ball to Tomar, and Tomar is hammering it straight down the ground. They got the man at the long off position. It goes over him for 6. 99. Get down and chill up the bass. $99 for Tomar. Of 38 deliveries with 15 fours and 5 sixes. Unbelievable strike rate, 260. Will he become the first player in the 7th season of the RCL to raise a century? Big moment of wait. The crowd is waiting in anticipation. Comes up from the far and is bowling to right-hand batsman Tomar, and Tomar is getting a full toss. He works away on the onside. He takes a single and raises first century of the RCL 2023. An amazing 100 from Narendra Singh Tomar on the land of Kota here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. A stroke play of a very, very high quality. Century of just 39 deliveries with a strike rate of 256, 15 fours and 5 sixes in this amazing 100. Sapalson takes the top 8. Fielder takes the catch. Wicket fallen. Incredible 100. Team on the verge of victory. He will certainly be appearing in tomorrow's newspapers. Has been a warrior for Kota over the years, featuring in Cornwall Shield in different age group competitions. He's famous for his stroke play, and he has certainly entertained everyone who has come on the ground. The tournament is kicking off in a fine fashion here in Kota, and the day has been made not only for Tomar but everyone watching here. It's been great privilege describing his batsmanship today. Captain Chandrapal has arrived to the crease, but Tomar will be on non-strike. Chandrapal just defends it back and across, looking to just blunt that ball, not allowing that ball to pass through his bat. Strong breeze blowing across the ground, the orange sun dropping down behind the thin layer of cloud there, which is becoming grey by every second passing by, but the effects of sun is still there on the clouds. You can see partly sunny. Waits and clicked away on the onside straight to man at mid-wicket inside the circle. There is no run. That marks the end of the over. The over that resulted in a century for Tomar, first of the tournament. Two more runs to win from 54 balls. Quite a dominating performance in the batting department, with Ajmer Meru Warriors winning the toss and deciding to bat first, posting 141 all out within their allotted 20 overs in the chase. They were looking for an attacking stroke play, a lot of expectation. There was some help for the fast bowlers, for spinners alike, but it has been a clear domination from the blade of Narendra Singh Tomar. Tremendous batsmanship, and he has certainly entertained everyone arrived here with the expectation of watching some boundaries. The artificial light is taking its effect here on this ground. One more match to follow on the second day of the event, coming up next, just after the completion of this game.
change in bowling from the commentary box end, rather the pavilion end, with Narendra Singh Tomar exactly on 139. Chandrapal Singh, the captain of the side, is there giving him company, looking to provide the finishing touches to the innings, to the match indeed. Right arm over the stumps into bowl to right hand batsman and clicks it away. Behind the square on the onside. It's gone for 6. What a way to finish the innings. Udaipur Mewar Royals registering a thumping victory by 8 wickets in just 11.1 overs. The bowlers from Ajmer Meru Warriors received quite a hammering today on this balmy evening here in Kota on this sporting Sunday evening. One more match to follow after this. Let me read the scorecard for you, those who arrived late on the ground. Narendra Singh Tomar making the headlines today with 106 of just 40 deliveries with 15 fours and 6 sixes with a tremendous strike rate of 265. Adil contributed 48 of 33 with 4 fours with a strike rate of 145 with 4 sixes as well. Parishik Jangir 29 of just 17. He was dismissed when they needed only 2 runs to register victory, and Nikhil Shukla went for 28 in their allotted 4 overs. Bhupendra Yadav 3 overs, 3 for 25. And Chandrapal Singh 2 for 11, making the major contribution for the teams. These been the best performers for the team. First with the ball, Nikhil getting 3 for 28, 3 for 25 for Bhupendra. Chandrapal 2 for 11 in 4 overs, mere economy of 2.75. Narendra Singh Tomar is in contention for the man of the match for his outstanding innings of 106 of 40. We take a short break. When we come back, we will have the toss ready for the second game. जैसलमेर के कैप्टन और जोधपुर के कैप्टन दोनों टॉस के लिए तैयार हैं. नरेंद्र सिंह तोमर मैन ऑफ द मैच के लिए मंच के सामने आ जाए अपनी टीम को साथ लेके. अविनाश जी, टॉस की तैयारी.
कमेंटेटर टॉस तो अनस भाई करा। एम्पायरिंग का देख लो, एम्पायरिंग का फोन कर रहा है। नहीं आप चलो, मैं एम्पायरिंग का बताता हूँ। अविनाश सिंह जी है ना, उनसे पूछ लेगा एम्पायरिंग का, बोल देना है ना। हाँ बिल्कुल, अनस भाई करेंगे। वो शेफाली भी साथ है ना, शेफाली जी बोल देंगे आज नहीं यार। एम्पायरिंग का नाम लिखो। राजेंद्र आमेटा एक तो मीर मेरा है और एक राजेंद्र आमेटा। दूसरा कौन है? अनुज राठौर। जैसलमेर जैगवार और जोधपुर जोधाना के जोन कैप्टन बोल दो ना, फिर आप ये कमेंट्री कर देंगे। इधर आ जाओ। कैप्टन कहाँ दोनों कैप्टन। अरे कैप्टन थोड़ा सा बोला, माइक से बोला। दोनों बना टू कैप्टन जैसलमेर जैगवार जल्दी भाग के जल्दी उधर वाले को भी अनस भाई थोड़ा इधर से लाइटिंग इधर और जो मेन हो वही रहो, बाकी सब क्लियर है। मैम। हाँ हाँ यस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग 2023 सीजन नंबर 7 आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला जैसलमेर जैगवार वर्सेस जोधपुर जोधाना के बीच में खेला जाए। इस मैच के मैच रेफरी भारत भूषण गौतम, बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी एंड दिलीप ट्रॉफी में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। अध्यक्ष केडीसी विजय शर्मा जी, अंपायर राजेंद्र अमेठा, अनुज राठौर, आरसीएल के जो डायरेक्टर अनस पठान, आईपीएल एंकर सैफ अली बगा हमारे साथ मौजूद और दोनों टीमों का मौजूद हैं। अनस पठान टॉस के लिए शिकाऊ चाल हेड कॉल किया गया, सॉरी टेल्स। जोधपुर जोधाना ने यहां पे टॉस जीता है। टॉस जीत के आप पहले क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे। देख रहे हैं कि आपको कैसा विकेट दिखाई दे रहा है, क्या सोच के पहले बैटिंग ले रहे हैं? अच्छा विकेट है, हम चाहते हैं टारगेट अच्छा करे और चेस करने के लिए दे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो यहां पे आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप अगेंस्ट टीम को कहां तक रोकना चाहेंगे? हम 150 के अंदर रोकना चाहेंगे, बस ये यही रहेगा। फर्स्ट एवर ये डे नाइट लीग हो रही है, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? काफ़ी अच्छी है
ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी अंडर लाइट्स खेलने को। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो यहां पर जोधपुर जोधा ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया गया। चलिए आइए रुक करते हैं कॉमेडी बॉक्स की तरफ। ये वाला सही है, वो सही A very good evening, everybody, from this beautiful Bhutan. हेलो हेलो, Check, check. Welcome to the post-match presentation of match number 3, Ajmer Meru Warriors versus Udaipur Mewar Royals, where Udaipur Mewar Royals won by 8 wickets and defeated Ajmer Meru Warriors. Let me begin with thanking our sponsors first. Our title sponsor, Crickadda, and other sponsors, Sky 247 Net and Sat Sport News. Now may I please invite and thank the presentation party standing right next to me. Mr. Vijay Sharma, President KDCA, Sanjay Sharma, Senior Vice President KDCA, Bharat Bhushan Gautam, former Ranji Trophy player, Anas Pathan, Director RCL. And now, may I please invite the losing captain first, Arjit Gupta, from Ajmer Meru Warriors. कहाँ पर है ये? अरे ये इकट्ठा करके रखना चाहिए ना, कहाँ गया हो? आशीष भाई, आप आ जाओ। तुम आ जाओ। On behalf of Arjit, Ashish is here. Arjit, आशीष आप प्लीज बताइए कि आज क्या what went wrong, क्या ऐसा हुआ कि you didn't make it today? Ma'am, first of all, thanks for RCL for this performance. And ma'am, विकेट अच्छा था, टीम भी अच्छी थी, पर अभी हमारा कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाया। हमारा पहला मैच था, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे हैं, तो हम अब सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि इस तरह से किस प्लेयर को कहाँ यूज़ करना है। सो वी विल बी फाइट बैक फॉर द नेक्स्ट मैच, दैट्स फॉर श्योर। All right, hard luck for today and better luck for the next match. Thank you.
Now may I please invite our winning captain, Chandrapal Singh from Udaipur Mewar Royals. पहले तो many congratulations, आपने सेंचुरी मारी आज, आपने आपकी टीम में आज सेंचुरी स्कोर की है और ये हमारे टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी है. And congratulations to you and your team for winning this match. थैंक यू सो मच मैम. टीम ने अच्छा परफॉर्म किया एंड पठान सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सारे कोटा प्लेयर्स को और राजस्थान क्रिकेटर्स को. तो होपफुली और क्रिकेटर्स यहाँ से आए. कल की हार को बैलेंस आउट किया आपकी टीम ने आज. अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी है पूरे टूर्नामेंट में? यस कल कुछ मिस्टेक्स हुई तो मेरे को फिनिश करना चाहिए तो मैंने नहीं किया. बट यस आज उस पर नरेंद्र तोमर ने पूरा उसको रिकवर किया और हमारी रन रेट को भी अच्छा किया जिसके लिए हमारे टूर्नामेंट में अच्छा रहेगा थोड़ा सा. All right. All the very best for your next matches and congratulations for today. Thank you. So this was our winning captain Chandrapal Singh from Udaipur Mewar Royals. Now it's time to call the man of the match, Narendra Singh Tomar. Very well played, Narendra. आप मुझे बताओ कि आप क्या खा के आए थे आज? आज तो कुछ भी नहीं खाया दिन में. मतलब खाली पेट आना is the strategy to score a century. आप ये समझ लो. अच्छा आपके माइंड में क्या चल रहा था when you were there on the field? यही था कि आज विकेट भी अच्छा लग रहा था और स्कोर 140 के आसपास चेस करना था. तो पहली थी यही थी दिमाग में कि जल्दी से जल्दी स्कोर चेस करेंगे तो रन रेट बेटर होगा, आगे टूर्नामेंट में अच्छा रहेगा. तो विकेट अगर नहीं गिरे तो हमारी प्लानिंग ये थी थोड़ा हिट करके ही खेलेंगे तो वो किक हुआ. Work for you. Thank you. Now please collect the man match trophy. And I would like Anas Pathan to hand over the man of the match trophy to him. Thank you so much. Thank you so much, Narendra. Very well played. Well, that's it for the post-match presentation for now. Thank you very much, and over to the commentators. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग 2023 सीजन नंबर 7 में. आज का ये दूसरा दिन है और दूसरा मुकाबला जैसलमेर जैगवार वर्सेस जोधपुर जोधाना रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा. टॉस जीता है यहाँ पर जोधपुर जोधाना ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. यह मैच दूधिया रोशनी में खेला जाएगा. बहुत ही बढ़िया और शानदार आगाज इस रजवाड़ा क्रिकेट लीग का.
Hello, hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. Umpires, 7:30 already हो चुका है. Please quicken up the play. Good evening and welcome back to the JK Pavilion International Cricket Stadium. Nayapura Kota hosting the 7th edition of Cricket Adda RCL 2023. In the second match, after that breathtaking batting performance from Narendra Singh Tomar in the third match of the championship, where he single-handedly smashed the opponents to surrender. We are in for another thrilling game here. Match number 4 of the competition. It's Jodhpur Jodhana taking on the team Jaisalmer Jaguar from the Marwar region. Here in Harat region, the two teams with some aggressive players in their ranks arrived to the center. The captain for the team Jodhpur winning the toss and deciding to bat first. And they are arranging the field at the moment the openers have arrived. Expect another thrilling performance from the players from both sides. Pitch has started to play well, as we have already seen a dominating batting display from the team Udaipur Mewar a while back. This is the match number 4, crowd building in under the artificial lights here in Kota. The 7th edition with some superstars featuring for various teams in Rajasthan from under 19 to under 23, also playing the Ranji Trophy featuring in this competition. The opening pair has already arrived. Slip in position, third man on the boundary, deep square on the boundary, fine leg is up in the circle, man at the mid-on position. Now sending the man on the boundary at the deep mid-wicket position. Can you believe it? Early on in the contest. Such is the ferocity of the batters these days. And that's the side here, willing to take charge here at this historic venue. Match is about to get underway. With slip in position is a tall man sporting the jersey number 5. Goes in right arm over the stumps to right in better. He gets a full delivery, is beaten outside the upper stump. It's going fine through to the keeper. The fielder from the slip region goes behind, but it's the man coming in from the third man region doing the dirty job of stopping the ball and making throw. Batters are through for runs. That ball didn't rise to the expectation of the batsman on that occasion.
The field remains the same. Man at deep square moves slightly in a squarish position. Wide is slip in position. Third man is very, very wide. Now they're sending the man on the boundary at the fine leg region. The man at the square comes inside the 30-yard circle at the mid-wicket position inside the circle on the onside. Too far outside the off stump. The batsman was shuffling along in the crease. Two power-packed batters with the potential of doing a bit of destruction job early on in the middle. Arman Malik is farming the strike at the moment with Krishna Shishodia. Too far outside the off stump. Is taking the angle away from the batter. He's getting some movement, working for himself. Anas Malik. Arman on not. He's facing to Anas Malik. Malik to Malik. Malik is getting a short ball outside the off stump. Was there a nick? A mild appeal from the wicketkeeper, not entertained by the on-field umpire. Two experienced umpires, they're on the field. Bharat Bhushan, the match referee. Anuj Rathod and Rajendra Ameta, the two on-field umpires for this second game today on the second day of the championship. Malik is pushing the ball away through the offside. Man from the cover region comes in and does the fielding. Artificial lights taking full effect here at the JK Pavilion International Cricket Stadium in Kota. Has witnessed Ranji Trophy match as well some time back. It used to be a big cricketing centre in the years gone by. Cricket returning to Kota. Short ball and pulled away behind square. They got the man on the boundary at the fine leg position. They collect a single. Decent first over from Anas Malik, operating from the pavilion end, just conceding 2 runs from the first over. Krishna is yet to open his account. Arman Malik is betting on 105. Quite a contradictory start, contrasting start what transpired in the second innings of the first match, where Narendra Singh Tomar went hammer and tongs, smashed a mouth-watering century. Two without loss. Brilliant first over from Anas Malik. Still keeping the man at the slip position on the offside. Third man on the boundary. Man at the backward point, cover point, extra cover and mid-off on the offside. Rather a cover, no extra cover. There is a huge gap available between mid-off and cover on the offside for the right hand batter. Fine leg on the boundary, square leg inside the circle, man at the short mid wicket and man at the mid-on position on these onside. 5-4 field. Chasing a wide delivery fumble from the keeper will prompt the batsman to collect a single. Another extra added by signal by the umpire.
sporting Sunday evening, the heat evaporating, it's becoming soothing by every second spent on the ground. Wonderful experience for the players participating in this match, the second match today evening. Makes a slight adjustment, sends the man on the boundary, the point on the offside. Fine leg is up in the circle. Hits him on the pad. Huge appeal for LBW. Umpire thinks the impact was a problem. Two men patrolling on the boundary at the point position on the offside, right in front of that stand. And third man right in front of the pavilion or that spectators gallery under lights here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. Mayank comes up and he drops a short ball. It's been pushed away through the offside, wants a run, sent back, rightly so. Skidding off the surface, not rising to the expectation of the batsman. As we saw in the first innings of the first game, there was invariable, inconsistent bounce. And that's what evident at the moment. Batsmen trying to gauge the pace and bounce of the surface are entangled mentally about what's going to occur, what's going to transpire of the next ball. It's event within the event. It's been driven into the cover region straight to the fieldsman, who moves to his left hand side to do the fielding with a white fluffy cap on. Normally in Australia they wear the white fluffy cap to avoid direct sun. With a few spectators sitting on the wall watching the proceeding. Beaten with a beautiful delivery, the away going one. Got the ball to shape away from the batsman. Terrific delivery. That will create more doubts in the mind of the batsman. Near the crease, the ball moving around, managed to hit the right length on that occasion. Can he consistently put the ball in that area to challenge the defensive technique of the batter? Something is going to occur. He comes up from the far end. Oh, it knocks him over. I told you it's bowled. Bells flying in the air. Wicket on the cards. Terrific bowling. The previous delivery, which managed to beat the outer part of the bat, set the tone. Then just making a slight shift in line of the delivery, and also the length pitching up and straightening after pitching around the off stump, hitting the top of the off stump, taking the bails off, and he gets the wicket. First wicket for Mayank Jangid. 2 overs bowled here in Kota in the 4th match of the championship, where Jodhpur Jodhana Royals are 1 wicket down for 3. A fine piece of bowling from Mayank Jangid. He managed to hold the line of the ball and went on to hit the stumps. Mayank has his first wicket, and Krishna Shishodia, the batsman, out. It is 3 for 1. Bowled him! But it's a no ball. It's a no ball. The first delivery right on the target, ripped the off stump out of the ground. Alas, it's a no ball. It's going to be a free hit. Heartbreak for the bowler, Anas Malik, operating from the pavilion end. A beautiful delivery, hitting the timber. But the batsman will have the luxury of going for Monty. Here he goes, Anas Malik, right arm over the stumps.
And he's bowling to right-hand batsman and pulls the ball away. Behind score on the onside for 4. Is that going to go to the boundary? Not quite. The fieldsman with a sliding effort on the boundary. 2 more runs accumulated, it seems. One wicket down for 6. Not quite taking the toll on the free hit. Slip. Third man on the boundary. Backward point. Men in the cover. Extra cover. Mid off on the offside. Extra cover is on barely 15 to 20 yards away from the batsman for that uppish drive. Right arm over the stumps. He's bowling to right-hand batsman. He plays it defensively, opens the face of the bat and glides the ball into the cover region for no run. Brilliant over so far from Anas Malik, barring bowling that no ball. He could have taken the wicket, but unlucky on that occasion as he overstepped, was given as a no ball, not quite taking advantage of the free hit, the batter there. Struggling for timing, trying to get used to the floodlights here. A bird flies low across the mid-wicket region. Rushes up. Oh, waits and gets the inner edge and gets a run here. Just nurdling across on the onside for a single. Real torrid time for the batters in the middle. This has been a real struggle for both batsmen. We are into the third over and this has been a circumspect start. Normally associate the power play with big booming drives and lofted shots. We haven't seen so many. The bowlers, they've been absolutely fantastic on hitting the right areas. The line and lengths from both bowlers, absolutely remarkable. Anas Malik into his second over. None for 5. Mayank Jangid bowling a wicket maiden. The batsman, left-handed bat. So now left-right combination in the middle for Jodhpur Jodhana Royals. Slipper waits. Tucked away on the onside, straight to man at mid-wicket. He's trying to tie up, pin down the batsman early on, looking to attack the stumps. As batsman has the feeling of throwing his bat around early on just to feel the ball on the ground. Searching for that meeting with the bat, and that's where a misadventure can occur. And that's why they got the man in the slip region with a red cap on, waiting for potential opportunity to take the catch in the slips. Anas running away from us. Right arm over the stumps into ball to left-hand batsman. A bouncing delivery well outside the off stump. It's been signaled as a wide. Another extra added, a no ball and wide as well from this over. Dark skies, artificial light on. Crowd building up to not to the capacity, but still a sparse crowd on all parts of the ground. Some of them are watching it from the top of the pavilion near the commentary box. Plenty of birds flying low and doesn't disturb the concentration of the batsman. Is up to the mark, just waiting for ball to arrive. Plays it defensively with the angular bat on the offside. Last ball of the over, number 3 to be bowled. Anas continuing to make impression with his accurate line and length. He's been bowling with great control and getting the ball to do the talk, barring spring one ball outside the off stump. Can he make a comeback?
cuts the ball and he gets into the gap on the offside. It's trickling away to the boundary. It's gone for 4. Sunny with silky timing through the offside for 4. Beautiful timing on that occasion. Didn't try to hit it hard, just presenting the full face of the bat. Just opening the face of the bat at the last moment to thread that gap available between man at cover and extra cover. Beautifully timed and placed to perfection. Picks up a 4. His first boundary in this innings. It's 1 wicket down for 12. Jodhpur Jodhana Royals. The bowling has been absolutely marvelous. 1 for wicket of the first ball for Tanmay Gupta. 1 wicket for 7 in 2 overs for Mayank Zangir. The bowling from man in yellow from Jaisalmer Jaguar from the Marwar region, both the sides, Jodhpur and Jaisalmer, bordering the Pakistan. The western part of Rajasthan, on the peripheral region of Rajasthan, from desert to education, coming a long way. Jaisalmer Jaguars, and they're playing against team Jodhpur Jodhana. Early Jolt received 2 big wickets falling inside 4 overs. Kurukshetra is the new batter at the crease with Sunny, who's batting on 5 or 4. Tanmay Gupta is striking up the first ball. A batter trying to play it across the line by moving across, wanted to get a fine deflection, the leg glance to get a boundary with fine leg up in the circle at 45. He's further creating acute angle. Leg cutter, very well handled. Watching the ball till the last moment onto the bat and thirsting the ball into the offside. Domination in bowling department. The Lions lengths terrific so far from all the fast bowlers operated so far in this innings from Jaisalmer Jaguars. They got man at the third man on the boundary with slip in position, still retaining that fielder. Short ball and pulled away on the onside, getting the inner part of the batsman at short fine leg, will get in there, pick up the ball and make the throw to the man at the mid-on position, who is polishing the ball at the moment. The white object. Still a hard new ball, prominent seam, possibility of getting something out of the surface which is absolutely barren. There's not even a tinge of grass on this pitch. The whitish sheet on the pitch, you can see it from distance. It's shining. You can see your face. It gives the mirror image. And you look into the pitch.
reaching for the ball and pushing the ball into the covers for no run. He's operating from around the wicket to left-hand batter, who has been quite patient since the beginning, losing 2 wickets, not helping to the cause of the team. In this crisis situation, trying to find a method, maybe through a strike rotation, to bounce back, to stage a comeback into the innings. Tanmay Gupta from round the wicket to left-hand batter. Full, comes forward, drives after the man at X to cover, no run. Tough examination, probing around the off stump. Batsman quite committed with his strokes, with his defensive play, trying to blunt as many deliveries as possible, attacking the stumps. The situation forcing him to bat differently. Full delivery, comes forward, plays it defensively, picks up the ball and hurls the throw. The batsman was well home. A fine over from Tanmay Gupta. 1 for 1 in his solitary over. 5 overs have been bowled, and this has been turbulent time for the batting unit. Jodhpur Jodhana winning the toss, batting first, 2 for 20 in 5 overs. Need to find a way to up the tempo in the batting department. Yes, credit should be given to the opposition bowling. They stuck to good line and lengths. Need some proactive approach from the batters to find a method to put the ball away, with only 2 fieldsmen allowed outside the 30-yard circle in the first 6 overs. In that field restrictions, will they take charge in this over, the 6th, the final over of the power play? 2 men on the boundary, man at point on the boundary, and a square leg is also on the boundary. Crucial over, might shape the fortunes of the game. The 6th one, the last over of the power play. Kurukshetra and Sunny, the 2 batters there in the center. Here we go. Driven down the ground, not quite getting the timing behind the stroke, just enabling the batter to take through for a single, scampering through for an easy single eventually. Not very often when ball is not moving around, you see the man in slip position. Now he's been removed for the left-hand batter, who possesses a fine, compact forward defensive stroke for himself. And that's what transpiring at the moment. Lights well in onto the pitch, creating a magical feeling for everyone watching the game under lights here. Goes over the top of mid-on, not quite. On the second attempt, he's taken the catch. And taking the pace of the ball, trying to heave it over the top of the man at the mid-on region, is feeding him the catch. On the second attempt, he managed to hold on to it. 3 wickets down for 23. We are into the 6th over. The power play overs with only 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. On top, the Jaisalmer Jaguars, the fast bowlers. They made few changes, but everyone has been up to the task, making it extremely difficult for the batters from Jodhpur Jodhana to thrive. Smattering of applause.
signaling that the bowling team is on top. Just taking the pace of the ball, little bit of extra bounce on that occasion, just playing it defensively. No damage done. Bowling a probing line around the off stump, a channel that bowlers like to maintain as long as possible if the batter is not charging down. What's the way to counteract and find a way to find a boundary from somewhere? Once again around the off stump. When you get into shell, when you get into this mindset of defending everything, run making automatically becomes an arduous task. And it has been quite an examination from the fast bowlers. Slow delivery and worked away on the onside. Picks up a single. 3 for 22. Last ball of the power play overs. Krishna Shishodia the batter out for not, bowled by Mayank Jangid. Arman Malik LBW bowled Tanmay Gupta for 10 of 16 and Sunny 5 of 8. Caught Anas Malik off the bowling of Sumit Sharma. Bouncing away dot ball to finish the 6th over. Run making has become a nightmarish experience for the batters under lights here in Kota. 22 for 3 after 6 overs. Jodhpur Jodhana Royals. Fast bowlers have been on song today evening here in Kota. Slow delivery leg cutter played to the man at the mid wicket, who is very, very straight at the moment with red cap on. Who was earlier doing the fielding at the slip region. Tall man, strongly built, and this time he bowls another slow delivery leg cutter. Played it to the man at the mid-off region for no run. Broad shoulders, can hit the deck and get the ball to bounce a bit. At the moment he's focusing on just maintaining the channel, doing nothing extraordinary, just putting the ball in that area and taking the pace of the ball. Power play gone, but still maintaining the same field. Down the pitch and plays it to the man at mid-on, takes a run. The fumble prompts him to complete it safely. Still a warm evening here in Kota at the JK Pavilion International Cricket Stadium, located in the heart of Kota, the education city, the education hub, famous for medical students arriving in large number from across India.
gets the inner edge, somehow managed to play this one away on the onside behind square for a single. Captain persisting with the fast bowlers. No challenge offered by the batters, hence they can afford to have as many fielders in position to save singles. Now, of the last, with 2 deliveries to be bowled in this over, they sent the man on the boundary at the long on region and a square on the boundary as well. Third man on the boundary. Plays it defensively, no run. Brilliant bowling performance so far from Jaisalmer team. Anas Malik 2 overs, none for 10. Mayank Jangir 1 for 7 in 2 overs. Tanmay Gupta into second over 1 for 3. Absolutely spot on. 1 for 2 in single over for Sumit Sharma. That's the bowling performance so far. All the fast bowlers, 4 fast bowlers been operation and they've been very, very accurate. And plays it defensively around the off stump. Brilliant over once again from Tanmay Gupta. Three wickets for 24. And that marks the end of the 7th over. Average score here at the JK Pavilion International Cricket Stadium has been 147 runs in the first innings, and in the second innings 131 in last 10 matches in a T20 format. Scores in the vicinity of 140 to 160 become quite competitive. Knocks him over, is bowled. Wicket stumbling here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. Jodhpur Jodhana experiencing very, very tough time here. 4 fast bowlers have been used so far by the captain, and they've been absolutely phenomenal for the captain. Bowling brilliant line and length. They hit the right length and they've been successful. They've been rewarded. 3 of them have been rewarded so far in this game. Kunal Singh is the new bowler. Piyush has a lot of experience playing in league matches, T20 format of the game, quite an experienced player. Will there be change in bowling? Who is going to come? They got few options. Sachin Pareta, right arm off break, or Mohammad Tashin Azad, right arm off break. So it's a lot of thinking needs to be done by the captain, what he wants to achieve at the moment. Will they continue to attack with the fast bowlers? And it seems that the fast bowling has been the option which captain believes in. Pushes through the offside, wants a run, and gets a run. Consolidation period, accumulating runs one by one.
brick by brick. They want to build an innings, but this hasn't been the kind of performance that they can be proud as a batting unit. Punched down the ground for a single. This has been slow and sedate batting performance. Batsman is struggling in their mind at the moment to somehow survive on the pitch because they lost plenty of wickets up front. 4 for 26. Neatly played away in front of square on the onside for a single. The line length from all the fast bowlers has been quite impressive. Driven down the ground for another run. They need at least 140 to make it competitive against Jaisalmer team, riding on wonderful performance from the bowlers. It's on top at this stage in the play. Need one good positive over from batting perspective. More shifting in the field. Man goes on the boundary at the long off position. Squeezes the ball out into the point region on the offside for a single. Eight overs bowled, 4 for 29, Jodhpur. Rahul Bhatt is betting on 4 of 10. Piyush Khatarnak is betting on 3 of 3. Kunal Singh 1 for 5. Tanmay Gupta 1 for 5. The performance so far. Piyush on 3 of 3. Rahul Bhatt is betting on 4. Finally, introduction of spin. Sachin Parita comes on to bowl. Unique action and throws it wide of the better wide signal. The current run rate is not so good, 3.55. And it plays a beautiful shot, but just a run fumble will prompt the batsman to come back for the second. The top order is back in the pavilion. 4 for 32. We are into the 9th over. Takes a run.
4 for 32. We are into the 9th over. More changes in the field now. Mid wicket goes on the boundary. And opens the face of the bat and glides it to the man at short third man region for no run. Trying to maintain fine tempo that's been generated by the fast bowlers. Run making is a tough task. Runs up his ball and this time hits him on the pad, walking across. Batsman stays in the crease. Umpire totally unmoved. Last ball of the 9th over. It's been a real struggle for batting unit, and this time he leaves one outside the off stump. It's been signalled as a wide. Here at the JK Pavilion Cricket Stadium. Last ball of the 9th over. Fieldsman on the boundary at the long on region. This time he clips the ball off his toes. Plays the ball to man coming in from the short fine leg region to his left hand side to do the fielding. And that marks the end of the over. 9 overs have been completed in the first innings. Jodhpur winning the toss and batting first. Are reeling at 4 for 35. And Suresh Goswami to describe the action from here on in Hindi. धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। जोधपुर जोधाना ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। उसके चलते अभी 9 ओवर में 35 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और हमारा बीच जीतू वर्मा उर्फ जोजो, सितारा, फिल्मी सितारा जोजो। कौन नहीं जानता जीतू वर्मा उर्फ जोजो को। अक्सर टीवी पे देखा करते थे, लेकिन आंखों के सामने और वो प्यार अभिवादन सबका स्वीकार करते हुए जोजो। करंट रन रेट की बात की जाए तो 3.89 का इस समय चल रहा है और उस हिसाब से अगर रन बनाते हैं तो कम से कम 80 के आसपास टीम पहुंच पाती है। लेकिन विकेट हाथ में जरूर है 6। किस प्रकार आगे का खेल दिखाती है जोधपुर जोधना रॉयल्स की टीम, ये तो समय बताएगा। लेग स्टंप पर भटकते हुए अंपायर का इशारा वाइड का। कीपर से भी गेंद मिस हुई पीछे की तरफ। जब तक फील्डर दौड़कर फील्ड करते, 1 रन अतिरिक्त और दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। जीतू वर्मा उर्फ जोजो फिल्म इंडस्ट्री के ये बादशाह रहे हैं। बॉलीवुड में इनके सिक्का भी चलता रहा है। इस बार ये गेंद बढ़िया खूबसूरत के साथ कट किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में से 4 रनों के लिए। एक बार फिर बढ़िया बॉल, इस बार मिस किया सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में। सुमित भाटी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अब बात करते हैं रजवाड़ा क्रिकेट लीग की। शुरू से ले अब तक ये 7वां सीजन चल रहा है। कटकिया कवर में फील्डर मौजूद हैं, रन लेने की कोई वहां संभावना है नहीं। तो 7वां सीजन है। ये 7वां सीजन किस ओर है ये आप सबकी आंखों के सामने है। डे नाइट अगले गेंद और धीरे से पुश कर दिया गले में से 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। खतरे वाले छोर पर दौड़ रहे थे खिलाड़ी पीयूष। और इस रजवाड़ा क्रिकेट लीग को सफल बनाने में और बहुत बड़ी लीग बनाने में आरसीएल के चेयरमैन जनाब आमिर पठान साहब को श्रेय है। और तहे दिल से हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे लेके गए हैं इस आरसीएल को।
यंगस्ट यहाँ से तो राजस्थान खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, इंडिया भी खेल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं साथ में इस ग्राउंड के अंदर चीयर लीडर हों या फिर उसके बाद में फिल्मी सितारे हों, वो हमारी आंखों के सामने और उनसे मिलना भी हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनसे हाथ मिलाना, उनका अभिवादन स्वीकार करना वो हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। तो उसका पूरा श्रेय जनाब आमिर पठान साहब को जाता है, जो आरसीएल के चेयरमैन हैं। दस ओवर की समाप्ति पर जोधपुर जोधाना रॉयल्स का स्कोर है 43, लॉस ऑफ 4 विकेट। काफी कसी हुई गेंदबाजी की है। जैसलमेर जैगुआर के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने एक्शन एक्शन, बल्लेबाज को पता नहीं चला, पीछे से गेंद अपना एक हाथ छुपा करके गेंद डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं कंफ्यूजन में रह जाते हैं बल्लेबाज कि अंदर आएगी कि बाहर जाएगी, ये मालूम नहीं चलता। शॉट है और ये छक्का भी है। राहुल भट्ट ने इस बार गेंद को पढ़ लिया और पढ़ा भी क्या, दे मारा बाउंड्री से बाहर। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं सचिन प्रेदा। पैड लाइन पे डाली हुई बॉल स्क्वायर लेग की ओर जा रही है, 30 यार्ड घेरे गए, अंपायर के पास से ही गेंद को फील्ड कर लिया, लेकिन एक रन वो तेजी से पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। आज का दूसरा दिन, ये दूसरा मुकाबला चल रहा है। आगे की गेंद थी, कारपेट के इशारे इस गेंद को मिड विकेट की ओर घुमाया, वहां खिलाड़ी दौड़कर आए, तेजी के साथ दौड़कर आए और एक ही रन लेने पे मजबूर किया दोनों खिलाड़ियों को। इससे पहले जो मैच हुआ था उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स और वर्सेज अजमेर मेरू वॉरियर्स के बीच में, जिसमें उदयपुर ने बहुत ही धमाकेदार तरीके से वो मैच जीता। नंदू तोमर ने क्या शानदार शतक लगाया और इस सीजन का वो पहला शतक। अगली गेंद इसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया, आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके बल्ले से इस सीजन 7 आरसीएल के सीजन 7 का शतक निकला और धमाकेदार धुआंधार वो शतक जड़ा था। और इस बार गेंद को स्टेयर किया थर्ड मैन की और कोई फील्डर नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इन 4 रनों के साथ जोधपुर जोधाना का रॉयल्स का स्कोर बढ़कर 56 रन हो गया। 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर इस समय कंप्लीट हो चुके हैं। जो रन गति थी वो धीमी, अब थोड़ा सा एक्सेलेरेटर दबाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 23 गेंदों में 32 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी किया, लेकिन वो शुरुआत तो वो सही रही नहीं जोधपुर जोधाना रॉयल्स की। 4 विकेट जल्दी खो दिए, उसके चलते इस समय दबाव में खेल रही है जोधपुर जोधाना रॉयल्स। मिडिल ऑर्डर पर जो जिम्मेदारी है वो पीयूष और राहुल भट्ट के ऊपर है और वो बखूबी निभा भी रहे हैं इस समय। स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, एक मिड विकेट, लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है। कवर का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है और बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो 30 यार्ड घेरे के अंदर। आगे की गेंद कट किया है,
कवर की ओर, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ वहां पर छत्ररक्षण किया, लेकिन तेजी के साथ दौड़ते हुए 2 रन पूरे किए यहां दोनों खिलाड़ियों ने। अगर सितारों की बात करें तो इस समय स्टेज पे मौजूद हैं जीतू वर्मा उर्फ जोजो। बड़े ही प्यारे इंसान हैं ये। सितारे तो जरूर हैं लेकिन इंसान भी बड़े मजेदार और बहुत ही शानदार हैं। जितनी बार मिलोगे बार बार मिलना चाहोगे इन सितारों से। हर न्यू दिन कोई न कोई इस स्टेज पे सितारे आते रहेंगे। ओह, एक समय अगर थ्रो होता तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज जोखिम की तरफ दौड़ रहे थे, फील्डर की तरफ धकेल कर रन लेना चाह रहे थे। सुमित भाटी लगातार गुड लेंथ लाइन जो उनकी है वो बिल्कुल एकदम स्टिक लाइन है, वो विकेट टू विकेट है। बल्लेबाज चाहकर भी बड़ा स्ट्रोक खेल नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर ये गेंद, आगे की गेंद कट किया उसको कवर की और फील्डर दौड़ करके आए और गेंद को फील्ड कर लिया, लेकिन 1 रन आसानी से पूरा किया। क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग 2023 7वां सीजन है और 7वें सीजन का ये जो रोमांच है वो डे नाइट का है। दर्शकों की लगातार भीड़ बताती है कि कितना प्यार, कितने एंटरटेन कर रहे हैं इस लीग को। और क्यों नहीं हो, ये लीग अपने आप में बहुत बड़ी लीग है। राजस्थान की तरफ देखा जाए या फिर ऑल इंडिया की तरफ या फिर विदेशों में भी इस लीग का नाम है और उसका पूरा श्रेय हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जनाब आमिर पठान साहब उनको जाता है। 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। जयपुर जोधाना रॉयल्स का स्कोर है 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हवा में है, अक्षा कवर के ऊपर से जा रही है और इसी मारे का एक टप्पा बाउंड्री लाइन के बाहर। तन्मय गुप्ता जिनकी ओवर पिच आगे की गेंद थी और खूबसूरती के साथ इस गेंद को
ग्लांस किया था, हवा में काफी देर तक रही जरूर थी, लेकिन उस और कोई फील्डर नहीं, वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला पीयूष ने, और क्या शानदार वो चौका जड़ा है। इस शानदार चौके के सहारे अब जोधपुर जोधना का स्कोर बढ़ते हुए 64 रन हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। और नहीं वो समझ सके कीपर, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। Suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. High music, high flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Tienes un besito, una. गेंदबाज तो खैर लेग स्टंप पर भटक ही गए थे, कीपर भी उस गेंद को गैदर नहीं कर सके, और नीचे रहती हुई गेंद थी, कोशिश जरूर की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके एक बार फिर। तन्मय गुप्ता की यह गेंद पैड लाइन पे, और धीरे से इस गेंद को ग्लास कर दिया है। ऑन साइड में वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन 1 मिल जाएगा। तन्मय गुप्ता की यह गेंद, और थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर रही लेकिन वहां खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं, 1 रन और मिल जाएगा। लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। 32 गेंदों में 47 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है, और इस पार्टनरशिप की बदौलत ही जोधपुर जोधना अब 71 रन पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई धीरे से इसको कवर क्षेत्र में खेल करके 1 रन पूरा कर लिया। इससे पहले जो मैच हुआ था उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स और अजमेर के बीच में, तो अजमेर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन बनाए थे, उसके जवाब में 10 दशमलव कुछ ओवर के गेंदबाजी के चलते उदयपुर ने वो मैच 9 विकेट से जीत लिया था, 8 विकेट से जीता था। तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने धुआंधार शतक जड़ा था। आगे की गेंद और खेल दिया इसको लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस विकेट के ऊपर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर 150 160 का स्कोर अगर खड़ा करती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फाइटिंग टोटल माना जाता है। लेकिन इस समय जोधपुर जोधना रॉयल्स की टीम 73 रन बना चुकी है, 13वां ओवर चल रहा है, 4 विकेट उन्होंने गंवा दिए हैं। तो 13 ओवर की समाप्ति पर जोधपुर जोधना रॉयल्स का स्कोर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जितने भी दर्शक यहां आए मैच देखने के लिए लगातार चीयर अप कर रहे हैं टीमों के खिलाड़ियों को, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे वो कोटा की हो, चाहे वो जयपुर, कोई भी एनीवे जो भी टीम है सबको चीयर कर रहे हैं, लगातार मैच देखने आ रहे हैं। और साथ में जो सितारे हमारे फिल्मी सितारे हैं वो स्टेज पे हैं, उनको भी लगातार देखने के लिए आ रहे हैं।
चौटी गेंद कट किया है, उसको कवर की छत्र में, वहां फील्डर मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा। जितने भी फैन दर्शक जितने भी आए हुए हैं वो छत पे जहां खड़े हैं चाहते हैं कि जो जीतू वर्मा वो आए, अभिवादन स्वीकार करें, इसीलिए वो लाइन लगा के खड़े हैं वहां पर। आगे की गेंद आगे निकल कर खेला, स्टेट द ग्राउंड, कोई मौका नहीं, 4 रन। Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we wait. सुमित भाटी की ये गेंद कट किया कवर्स में। कवर्स का जो फील्डर है वो बिल्कुल ऊपर 38 घेरे के अंदर है, वहां से रन लेना इतना आसान नहीं है। और इस बार गेंद को घुमा दिया डी मिड विकेट की और फील्डर वहां मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, दूसरा रन तेजी के साथ पूरा किया है और अच्छी रनिंग बिटवीन द दोनों खिलाड़ियों के बीच में। दूधिया रोशनी से नहाई ये स्टेडियम जेके पेविलियन, खूबसूरत नजारा है। आगे की गेंद ड्राइव करना चाहते थे लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक था ही नहीं। रंग बिरंगी ड्रेसें हैं और इन रंग बिरंगी ड्रेसों में जो खिलाड़ी खेलते हैं कहीं न कहीं चौके छक्कों की बरसात तो वो दर्शक देखना चाहते हैं। अच्छे गेंद और धीरे से पुश करके 1 रन ले लिया। आज टॉस जीता इस दूसरे मैच में जोधपुर जोधाना रॉयल्स ने और पहले बल्लेबाजी करने की वो चाहत रखी कि एक अच्छा टोटल खड़ा करेंगे। लगातार लगे हुए जरूर हैं लेकिन जो रन रेट है वो 6 से नीचे लगातार चल रहा है। 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 82 रन, 4 विकेट खोए हैं और यही रन गति रही तो स्कोर 120 के आसपास का बनता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से अगर एक बल्लेबाज अगर चांस लेता है तो बड़े बड़े हिट्स खेलने पड़ेंगे। और अब जो पिछला मैच जो हुआ था उसमें 141 रन बनाए थे अजमेर मेरू वॉरियर्स ने और उदयपुर के नरेंद्र सिंह तोमर ने जो शतक लगाया वो मैच 11 ओवर में ही वो मैच समाप्त कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये विकेट बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल है। आगे की गेंद अच्छी गेंद, पैड लाइन की गेंद थी, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की क्षेत्र की ओर। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। तन्मय गुप्ता लगातार अपना चौथा अपने कोटे का लिए अंतिम ओवर है और टीम के लिए वो 15 ओवर डाल रहे हैं। 18 रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं और एक सफलता उनके हाथ लगी है। कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मौजूद है। मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। बाकी सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में खेला और 1 रन वो तेजी के साथ दौड़कर पूरा कर लिया। स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर है। 5 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हैं।
कहीं ना कहीं बल्लेबाज से गलती हो और वो उस कैच को पकड़ने के लिए वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं। आगे की गेंद एक बार फिर से इस गेंद को घुमा दिया इस खेले की ओर। जैसलमेर जैगवार टीम येलो ड्रेस में है। चेन्नई सुपर किंग्स की जिस प्रकार से वैसी ड्रेस जैसलमेर जैगवार टीम की। ओह अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे पीयूष, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो पाया। Cricketa.com RCL कुणाल सिंह की आगे की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच बॉल और आसानी के साथ खेल करके एक रन तो जरूर पूरा कर लिया। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग कवर। ये फील्डर जो फील्डर हैं वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर हैं। कुणाल सिंह राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद हो। और इसके साथ 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जोधपुर जोधना रॉयल्स का स्कोर 87, लॉस ऑफ 4 विकेट। जोजो जीतू वर्मा स्टेज पे मौजूद। फनी टाइम। आरसीएल के जो डायरेक्टर अनस पठान हैं वो 24 घंटे ऐसे ही इस लीग के लिए ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और तभी सफल बनते हैं कोई आयोजन। इस आरसीएल को आगे ले जाने में, इस प्लेटफॉर्म पे लाने, जहां डे में होता था आज डे नाइट का हो रहा है, तो लगातार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है ये रजवाड़ा क्रिकेट लीग। और जनाब आमिन पठान साहब जो चेयरमैन हैं आरसीएल के, उनके दमखम पर, उनके ही बलबूते पर आज बहुत बड़े बड़े नामी प्लेयर्स यहां खेल रहे हैं, फिल्मी सितारे यहां मौजूद हैं। अब आईपीएल्स में चीयर लीडर को देखते हैं, चीयर लीडर यहां भी मौजूद हैं। तो ये सभी दर्शकों की आंखों के सामने यहां सब कुछ देखने को मिल रहा है। इस बार चांस लिया और सीधा फील्डर की गोद में समा गया। इस चांस लेना बनता भी था। रन रेट लगातार 6 से नीचे चल रही थी। 16वां ओवर स्टार्ट हो चुका है और उसके चलते दबाव बन रहा था बल्लेबाज के ऊपर और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे। मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी ने आसानी से वो कैच पकड़ा। 5वां झटका लगता हुआ यहां पर जोधपुर जोधना रॉयल्स को। जेके पेविलियन इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बहुत ही अच्छा शानदार सुंदर ग्राउंड है, हरा भरा ग्राउंड।
बैठने के लिए अच्छी सीढ़ियाँ और बहुत ही बढ़िया ग्राउंड अब तक का कोटा का रहा है, इंटरनेशनल ग्राउंड रहा है, जिसके चलते ये इतनी बड़ी लीग आरसीएल लीग इस ग्राउंड पे खेली जा रही है। प्रहलाद यादव 90 मैचों का अनुभव, 423 रन हैं, वो बल्लेबाजी के लिए पहुंचे इस समय। प्रहलाद यादव सामना करेंगे सचिन प्रेता का। ये गेंद और धीरे से इस गेंद को स्टेयर किया थर्ड मैन की ओर, अच्छा क्षेत्ररक्षण किया वहां पर खिलाड़ी ने और बढ़िया तरीके से इस गेंद को रोक लिया। सचिन प्रेता जिसका एक्शन अलग ही है, सुनील नारायण जैसे जिस प्रकार से पीछे गेंद छुपा के लेके आते हैं, कुछ उसी ही अंदाज में सचिन प्रेता भी गेंद को छुपा के लेके आ रहे हैं पीछे की तरफ से। और बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, दाद देनी होगी यहां पर जैसलमेर जैगवार के खिलाड़ियों की, लगातार अच्छा क्षेत्ररक्षण करते रहे हैं और जोधपुर की टीम के खिलाड़ियों पर लगातार दबाव बनाते रहे हैं। थोड़ी छोटी जरूर थी गेंद, बैक पे जाके इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन। सचिन प्रेता कोई ज्यादा बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दे नहीं रहे हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी विकेट टू विकेट, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी खराब गेंद डालें और उस पर बड़ा स्ट्रोक। और इस बार आगे की गेंद थी और बाउंड्री लाइन के बाहर भी जाएगी, 4 रन। सोलहवें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जोधपुर जोधपुर रॉयल्स का स्कोर है 95 रन, 5 विकेट के नुकसान पर, 95 लॉस ऑफ 5 विकेट जोधपुर जोधपुर रॉयल्स। इस पहले इनिंग के महज 4 ओवर शेष हैं। अब देखना यह होगा कि बाकी के बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे और स्कोर को कहां तक सेट करेंगे जैसलमेर जैगवार के लिए। पीयूष 25 गेंदों का अब तक सामना कर चुके हैं, 29 रन पर खेल रहे हैं, 3 चौके उसमें शामिल हैं। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और विकेट का उनको अनुभव भी हो चुका होगा कि कहां गेंद ऊपर उठ रही है और कहां नीचे रह रही है, तो कहीं ना कहीं वो आंखें अपनी जमा चुके हैं इस समय विकेट के ऊपर। मयंक जांगिड़ के हाथ में गेंद है, लंबा बॉलिंग रनअप के साथ, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस कवर्स में सीधे फील्डर के पास, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। एक मौका था यहां पर बाउंड्री में तब्दील करने का इस गेंद पे, लेकिन सीधे फील्डर के पास मार बैठे, कोई रन नहीं।
और इस बार आड़ा टेढ़े बल्लेबाज से खेलने की कोशिश, रन कुछ अटपटे अंदाज में बटोरने की कोशिश की थी बल्लेबाज पीयूष ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। कसी भी गेंदबाजी की है जैसलमेर जैगुआर के गेंदबाजों ने, और भरपूर साथ दिया गेंदबाजों का, फील्डरों ने भी लगातार अच्छा क्षेत्रकर्षण के चलते हुए बांध के रखा है अभी तक बल्लेबाजों को। मैंग जैंगिड राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद, और इस गेंद को इस बार मिडिल ऑफ बैट के बीच में से लेकर गेंद को खेला डिप मिड विकेट की, और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। एक रन तो आसानी से पूरा कर ही लेंगे। बल्लेबाजों को वो रेंज मिल नहीं रही है जो बाउंड्री के बाहर दे के मारें, गेंद को उठा के खेलें। ऐसी कोई लूज बॉल डाली नहीं है अभी तक गेंदबाजों ने। मैंग जांगिड़े लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, इसके चलते बल्लेबाज ज्यादा खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। और इस बार फुल टॉस, कीपर भी कुछ समझ नहीं पाए, और बाई के रूप में यह चौका मिलता हुआ यहां। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डालने की कोशिश कर रहे थे मैंग जांगिड़, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फुल टॉस रह गई। कीपर भी कुछ समझ नहीं पाए। वो जब तक कोशिश करते नीचे झुकने की, तब बॉल निकल चुकी थी, और इसके जब बाई के रूप में एक और चौका मिलता हुआ यहां जोधपुर जोधाना रॉयल्स के लिए। तो यह अच्छा है ही, लेकिन जैसलमेर जैगुआर के लिए अच्छा नहीं रहा। इसके साथ 100 रन भी पूरे यहां पर जोधपुर जोधाना रॉयल्स के। और फिर से इस गेंद को गली के बीच में से कट किया, लेकिन सीधा फील्डर के पास। स्टेज पर सितारे मौजूद हैं। जोजो, जीतू वर्मा, आईपीएल फेमस एंकर शेफाली बग्गा, बिग बॉस फैम शेफाली बग्गा, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्टर जोजो। सितारे हैं ये सितारे, इनको जितनी बार दिल में उतारोगे उतना ही कम है। बड़े प्यारे हैं, जितना बड़ा प्यारा नाम उतने बड़े प्यारे सितारे हैं ये। बिग बॉस फैम शेफाली बग्गा, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्टर जोजो। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जोधपुर जोधाना रॉयल्स का स्कोर 102 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। मात्र 3 ओवर शेष हैं। देखना होगा कि जोधपुर जोधाना के बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं और कितने ज्यादा से ज्यादा वो स्कोर बोर्ड पे अपना स्कोर खड़ा करते हैं अगेंस्ट टीम के लिए। अनास मलिक पेवलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। और सामने बल्लेबाज होंगे पीयूष।
अनस मलिक राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबे बॉलिंग रनअप के साथ। ये गेंद अच्छी गेंद, गेंद में पेस थी, गेंद में तेजी थी और उसके चलते मात्र सिंगल यहां पर मिला। जेके पेवेलियन इंटरनेशनल स्टेडियम का खूबसूरत नजारा है ये। अब बढ़िया बॉल, अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली। प्रहलाद यादव इस गेंद को स्टीयर करना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। ये 18वां ओवर चल रहा है, 103 रन मात्र बने हैं जोधपुर जोधना रॉयल्स के। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कसी भी गेंदबाजी और बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण हुआ है जैसलमेर जैगवार की तरफ से। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद हैं और ये कैच जॉब हो गया है। जहां विकेट मिलना चाहिए था वहां पे रन्स मिल रहे हैं। हालांकि फील्डर उस कैच तक पहुंच भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी ड्रॉप हो गया। अनस मलिक कप्तान हैं, थोड़े से नाखुश जरूर नजर आए उस कैच पे। और इस बार इस गेंद को घुमा दिया है मिड विकेट क्षेत्र की ओर। वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन ही मिलेगा। पीयूष काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 30 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक छोर संभाले हुए हैं, जब जैसे जैसे विकेट गिरते गए उनके ऊपर दबाव बनता गया, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। कम से कम एक दो ओवर जो बाकी बचे हैं उनमें बड़े ओवर में तब्दील करना होगा जोधपुर जोधाना के बल्लेबाजों को। वरना जैसलमेर जैगवार टीम, और इस बार पैड पे अपील हो रही है, लेकिन एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा कर लेंगे। अंपायर से राजेंद्र मेठा और अनुज राठौड़, काफी अनुभव है इनके पास। बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर, और अंपायर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए हैं, तो इसका मतलब अतिरिक्त रन वाइड के रूप में जोधपुर जोधाना रॉयल्स के खाते में जुड़ता हुआ।
ओह, बहुत ही बढ़िया, अच्छा एफर्ट वहां पर फील्डर के द्वारा। बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्टर जोजो इस समय ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, अपने फैंस का वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जोजो, जीतू वर्मा, फिल्मी सितारे ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। नगर विकास न्यास कोटा जो जहां स्टैंड है उसकी तरफ से वो इस समय गुजर रहे हैं। और उनके फैंस अब पीछे दौड़ रहे हैं, उनके फैन पीछे दौड़ रहे हैं। अठारह ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जोधपुर जोधाना रॉयल्स का स्कोर 109 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर करंट रन रेट 6.06 का, और यहां से अगर इसी रन गति से रन बनते रहे तो 121 के आसपास रन बनते नजर आ रहे हैं। 2 ओवर शेष हैं, अब देखना होगा कि दोनों बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं इन 2 ओवरों में। कुणाल सिंह की यह गेंद कट किया पॉइंट की गली के बीच में, और 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। बढ़िया गेंद ब्लॉक हॉल में, बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया। डेथ ओवर में इस प्रकार की गेंदबाजी देखने जब मिलती है तो दिल गदगद होता है, क्योंकि ये जो लास्ट के ओवर होते हैं, डेथ ओवर होते हैं, इनमें आप ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी करें या फुल लेंथ बॉल डालें तो कहीं ना कहीं ये गेंदबाजी के लिए बहुत ही बढ़िया, और ऐसा ही कुछ इस पिछले गेंद पे प्रतीत हुआ। एक बार फिर कुणाल सिंह, इस बार छोटी गेंद थी और फिर से इसको स्क्वायर लेग की ओर खेला, 1 रन मात्र मिलेगा। और कुणाल सिंह की यह गेंद क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज पीयूष। तो इस तरीके से यह जोधपुर जोधाना रॉयल्स को लगने वाला छठा झटका था। 19वां ओवर चल रहा है, लगातार जैसलमेर जैगुआर के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की है, और दूसरी तरफ इन्हीं के छत्ररक्षणों ने और बहुत ही बढ़िया छत्ररक्षक करके दिखाया इन्होंने, और शानदार फील्डिंग के चलते दबाव बनाया हुआ जोधपुर जोधाना रॉयल्स के ऊपर। हालांकि टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अशद मिर्जा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। cricketa.com RCL 2023 सीजन नंबर 7।
बाएं हाथ के बल्लेबाज जसद मिर्जा इस समय बल्लेबाजी करेंगे और सामना करेंगे कुणाल सिंह का। कुणाल सिंह ने किफायती गेंदबाजी की, अब तक तीसरा ओवर कर रहे हैं, 12 रन मात्र खर्च किए हैं, 2 विकेट उनके खाते में हैं। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, अंपायर्स के दोनों हाथ फैल गए हैं, इसका मतलब ये वाइड है। अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़कर 113 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार ओवर पिच गेंद इसको घुमा दिया है मिड विकेट क्षेत्र की और वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन ही मात्र मिलेगा। एक रन से कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं जैसलमेर जगवान की टीम के ऊपर। बांध के रखा है जब से ही उन्होंने शुरू किया है गेम को, काफी कसीवी कंजूसी भरी गेंदबाजी की है। चाहे कप्तान अनस मलिक हो और चाहे कुणाल सिंह हो। छोटी गेंद इस बार पुल किया है इसको डीप मिड विकेट क्षेत्र की और वहां खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे रन के लिए भी पलट पड़े हैं दोनों और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। और इसके साथ 19 ओवर की समाप्ति, जोधपुर जोधपुर रॉयल्स का स्कोर है 116 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। इस पहले इनिंग का अंतिम ओवर शेष है। अशद मिर्जा अंतिम ओवर लेकर के, अनस मलिक की यह गेंद, बढ़िया गेंद, कट किया, गली में फील्डर मौजूद हैं। और जब से देखा है शुरू में लास्ट के 2 डेथ ओवर हैं उन वहां अच्छी बल्लेबाजी और रन काफी बटोरने होते हैं, ऐसा हुआ नहीं कुछ। किफायती गेंदबाजी जैसलमेर जगवार के गेंदबाजों के द्वारा और उतनी बेहतरीन फील्डिंग दिखाई है इन्होंने। फाइन लेग ऊपर बुला लिया गया, थर्ड मैन भी बिल्कुल ऊपर है, पॉइंट कवर का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, ये गेंद अच्छी गेंद। जैसे इन थर्ड मैन और फाइन लेग ऊपर लिया है तो अटपटा शॉट खेलने के अंदाज में वहां पर प्रहलाद यादव। सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर बल्लेबाज। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला पिछली गेंद पे। अर्शबाज शेड द ग्राउंड शॉट खेला है और मिस फील्ड हो गई है और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie.
attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection. फील्डर थोड़े वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ थे, जब तक वो लॉन्ग ऑन की तरफ दौड़कर जाते, गेंद जहां से टप्पा पड़ा वहीं से घूम गई और मिस फील्ड के चलते 4 रन मिले। इस बार अच्छी गेंद अंदर आती हुई तेजी के साथ गेंद, बढ़िया गेंदबाजी अनस मलिक के द्वारा और तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा। बहुत तेज रनिंग बिटवीन द दोनों खिलाड़ियों के बीच में इस समय। पहले इनिंग का ये अंतिम ओवर चल रहा है, स्कोर बढ़कर 123 हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर। प्रहलाद यादव स्ट्राइक पे हैं। अनस मलिक राइट आर्म ओवर द विकेट और लीजिए विकेट गिरता हुआ, पहली सफलता अनस मलिक के हाथ में। अनस मलिक की वो गेंद बहुत तेज गेंद थी, बल्लेबाज प्रहलाद यादव उस गेंद को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना बल्ला चलाया था, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। तो इस तरीके से 7वां विकेट गिरता हुआ यहां पर जोधपुर जोधना रॉयल्स का। अनस मलिक और लीजिए फाइन लेग के ऊपर से गेंद हमारी तरफ ही आ रही है और गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रन। अच्छा फिनिश। नीतिराज सिंह ने इस पहले इनिंग को चौके के साथ फिनिश किया, उसके चलते जोधपुर जोधना रॉयल्स का स्कोर 20 ओवर में 127 रन बने हैं। मात्र 128 रन का लक्ष्य मिला है जैसलमेर जैगुआर्स को। एक तरफ अगर जोधपुर जोधना रॉयल्स के स्कोर कार्ड की तरफ ध्यान दें, कृष्णा सिसोदिया जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, खाता उनका खुला नहीं। अरमान मलिक 16 गेंदों में 10 रन, 1 चौका शामिल। सन्नी जिन्होंने 8 गेंदों में 5 रन बनाए जिसमें 1 चौका शामिल। कुरुक्षेत्र 6 गेंदें खेली, 3 रन उन्होंने बनाए। राहुल भट्ट 33 गेंदों में 29 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का शामिल। पीयूष जिन्होंने 33 गेंदों का सामना किया, 32 रन बनाए, 3 चौके उसमें शामिल। प्रहलाद यादव 16 गेंदों में 21 रन, 2 उन्होंने चौके लगाए। और अंत में नीतिराज सिंह ने 1 गेंद मात्र उनके खाते में मिली और उन पे वो चौका बटोरा था, उसके चलते जोधपुर जोधना का स्कोर 127 रन 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की तरफ ध्यान दें तो जैसलमेर जैगुआर की तरफ से कप्तान अनस मलिक ने 4 ओवर में 27 रन खर्च किए, 1 विकेट मिला। मैंग जांगिड़ जिन्होंने 3 ओवर 1 मैडन 10 रन 1 विकेट। तन्मय गुप्ता 3 ओवर 17 रन और 1 विकेट। सुमित शर्मा जिन्होंने 1 ओवर किया 2 रन खर्च किए, 1 विकेट उनके खाते में। कुणाल सिंह 3 ओवर 16 रन 2 विकेट। सचिन प्रेता 3 ओवर 27 रन 1 विकेट। सुमित भाटी 3 ओवर 20 रन। यह बॉलिंग का लेखा जोखा रख रहा है जैसलमेर जैगुआर का।
Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. जोजो हॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्टर अब स्टेज की तरफ बढ़ते हुए ग्राउंड के चारों ओर उन्होंने अपने फैंस का अभिवादन किया, चक्कर लगाया और उनके साथ हाथ भी मिलाया। Hello, hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. Hello, hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. Hello, hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already.
the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. ये खूबसूरत जो ट्रॉफी है, चमचमाती ट्रॉफी है, सभी टीमों के कप्तानों की नजर इस ट्रॉफी पे है। और इस ट्रॉफी के, चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो कौन नहीं लेना चाहेगा। यही तो जोश और यही जज्बा, यही जुनून है इस आरसीएल का। क्रिकेटर rcl.com, cricketer.com RCL 2023 सीजन नंबर 7 डे नाइट। ये लीग बहुत बड़ी लीग है। इस लीग का नाम चारों दिशाओं में फैला हुआ है। Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. चौके और छक्कों पर जिस तरीके से चीयर लीडर थिरकती हैं तो दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट होता है उस समय। और दर्शक आते ही एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे वो चौके छक्कों की बरसात हो, चाहे वो चीयर लीडर के उस समय डांस की बात हो, चाहे वो बॉलीवुड सितारे हो। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फिल्मी सितारे, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्टर जोजो। स्टेडियम की छत पे जो जितने भी इनके फैन हैं वो देख रहे हैं जोजो की तरफ। और दूसरी तरफ बिग बॉस फेम सैफ अली बगा। Hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. Hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. Hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already.
Hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. Hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. Hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already. Hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7:30 already.
जैसलमेर जैगवार के दोनों ओपनर्स तैयार हैं। उधर जोधपुर जोधाना के जो फील्डर हैं बिल्कुल तैयार, गेंदबाज भी तैयार। अब देखना होगा कि 127 रन को कैसे डिफेंड करते हैं। ये तो समय बताएगा कौन सी टीम जीतेगी। जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। लंबे एकदम बॉलिंग रनअप के साथ बॉलर खड़े हैं। जेके पेविलियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, नयापुरा कोटा, जहां से हम आपको cricket.com RCL का आपको देखा हाल सुना रहे हैं। फिर से स्वागत, मैं हिंदी कमेंटेटर सुरेश गोस्वामी। ये दूसरी इनिंग है, 128 रनों का लक्ष्य मिला है जैसलमेर जैगवार को। All right. Slashed away over the top and away to the boundary for 4. $128 to win. What a start. A cracking shot through the point region for 4. Jodhpur Jodhana managing only 127 for 7 in 20 overs. Hits it to the man at the mid-wicket position on the onside. Outstanding bowling performance. And Jaisalmer Jaguars, all the bowlers were spot on, especially the fast bowlers in the first 10 overs, giving nothing away to the opposition. Early start is going to be key from bowling perspective to have or harbour any hopes of winning this game. Slip in position, third man on the boundary, man at the deep square on the boundary on the onside. Swing and miss, little bit of movement away from the batsman, it's wobbling around, can present a bit of challenge to the batters. Sumit Sharma is batting on 4 of 3 with the help of a boundary. SRK is yet to open his account. Yadav into his first over. Good comeback after conceding the boundary early on in the over. Pulled away, not in control of the stroke. They got the fielder there, walking across, and the batters will collect a single. Good collective bowling performance from Jaisalmer Jaguars, especially the battery of 4 fast bowlers who bowled magnificently, maintaining good line and length and getting the ball to move as well. Did not give the width to the batsman to work with. The top order struggled big time to contend with that excellent fast bowling performance from the team Jaisalmer Jaguars. Runs up. Short ball looking to play the pull shot through the onside. It's going fine. A man at the short fine leg region comes across, trying to meet fire with fire. Artificial light taking full effect here with the sparse crowd in different patches of the ground just outside. Some of them are watching it from the walls and also from the pavilion. Just a mini conversation
with the fellow man at the point and backward point, just strengthening that region through the square of the wicket on the offside. Play and miss, away going delivery once again. Good outswinger to finish the first over. 5 without loss. Squeezes out into the offside, men in the backward point position, patrolling in there, stopping the ball from going away from that fieldsman at the backward point position on the offside. A dot ball achieved. Another good delivery in the right channel, continuing to make impression there on the field. Third man up in the circle, fine leg up in the circle. Smoked away down the ground. There is a fumble at mid-off position. And that's gone away to the boundary for 4. Miss. Nine without loss. A handsome boundary, courtesy misfield. Worked away through the onside. They got the fielder coming in from the boundary. At the squarish position for a single. Artificial lights on, giving a soothing effect to the eyes of all the spectators and players in particular, experiencing magic here in Kota. Hits him on the pad, huge appeal for LBW, not entertained by the umpire. Excellent delivery, is trying to weave a magic around the off stump. Looking to trap the batsman in front, wanted to work it with soft hands, not successful though on that occasion. Comes up and is bowling to him. This time he flicks the ball away to the man at mid-wicket on the onside for no run. The need a wicket, 2 overs bowled, none for 10. The team Jaisalmer Jaguars in the chase. The average score at the JK Pavilion International Cricket Stadium is 147. In the first innings, 131. So they're nearing that average score in the first innings. And that's been the story in the last 10 matches on this very ground in the RCL. This is the 7th edition of the tournament. Nice, lovely evening here in Kota. They have for education, especially for medical education. Fast bowler will continue. They need early wicket in some form. Third man on the boundary, backward point, man at the point position, man in the covers and mid-off. There is a huge gap available between the man at the cover and mid-off on the offside.
Just going down the leg side, wide will be signal from the umpire. Good pace, the length was also good. Early on, searching for some movement. Just drifting down the leg side, straying down the leg side, wide signaled. Good aggression, they need a wicket in some fashion. Looking to force a nick through to the keeper. Absolute still at the moment. Short ball and takes the top edge. This could be caught, just falling in front of the fieldsman. Coming in from the point position. He survives a scare. Good, fast, aggressive, accurate bowling. That was a brute of a delivery. Little bit of extra bounce. The batsman was forced to play a forcing stroke. Almost lobbed that one. Yadav into second over. Driven back to the bowler. Attempted, but there is a misfield at mid-wicket region. A little bit of deflection will result in a single. A marvelous evening here. Sunday sporting evening. Crowd developing with the passage of the time. Much comfortable, much more soothing for the players and the spectators. It's not that hot and humid, the humidity that we experience in the afternoon. It was scorching hot, 45 degrees centigrade, and then very, very humid. Much better under lights here for the players. Yadav to SRK. And defends it, front foot forward. A defensive stroke results in no run. Sensing a wicket here. Good, accurate bowling. Varying his length, but he is bowling with great pace. There is a conscious effort to force a wicket here in some fashion. And he's been trying for quite some time. Can he find the outside edge? Hammered hard to the man at the mid-on position. There is no run. This is brilliant bowling so far from this over from Yadav. Another dot delivery achieved. Runs hard to come by. It's small targets. 116 to win from 104. But if they continue to apply pressure, you never know, things can change very, very quickly. There's some obstruction in front of the side screen. That's the signal from the umpire. Just to walk away from this side screen. Here is Yadav once again to SRK. Short ball takes the top edge. It's going down to the third man boundary. The fielder is there. He won't reach there. It's gone for 4. Fast and furious. Another short lifting delivery around the off stump. The batsman went underneath. Should have played it over the top, but taking the top edge, trying to pull the ball away on the onside. And the ball races away to the boundary, beating the fieldsman, who was barely 10 yards away from where the ball travelled into the picket fence for 4. Yadav to SRK. Shot and pulled away. Behind score on the onside. Fine leg is up in the circle. It's gone for 4. Back-to-back boundaries for SRK. Are you ready? Back-to-back boundaries to bring some momentum into the batting department. The opening pair trying to set the tone into the innings. A fruitful over, a productive over from batting perspective. There will be spinner from the far end. That's for sure, looking to take the pace of the ball. Early wickets key for the team Jodhpur to
harbor any hope of winning this game from this situation. Dark skies, floodlit JK Pavilion International Cricket Stadium. It's a multi-purpose stadium. Fine work done by the ground staff to prepare the outfield. It's lush green, it's extremely quick. Shot, trying to work through the onside, gets the leading edge. There's a misfield. Don't see the batsman attempting a run there. Ashad Mirza bowling from the far end. Smoked away, straight down the ground, straight into the side screen for a humongous six. Are you ready? Sumit gets one into his channel and he dispatches it over the bowler's head, straight down the ground for a six. Superb six from Sumit. More changes in the field now. The fielder from mid-wicket is coming inside the circle, after the square leg inside the circle. Men on the boundary at long on. This time he turns the ball away on the onside, mid-wicket inside the circle, picks up the ball and gives it back to the bowler. A powerful strike down the ground from Sumit. None for 26. Knocks him over, he's bowled. Yo, yo, 1 for 26. Gasolina en el verano a los Locks de 1107.7. Súbelo que esto es barrio fino. Súmale vamos pa' que mi gata prenda los motores. Súmale vamos pa' que mi gata prenda los motores. Súmale vamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le den. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro, todos los weekendes ella sale a vacilar. Duro. Wicket at the crucial juncture in play. Sumit, the batsman, out for 17 or 14 deliveries with 2 fours and 1 gigantic six. Mirza gets the revenge back. It is 1 for 26 after 3.4 overs. Semblance of hope for the team Jodhpur to stage a comeback. Can they make a comeback of epic proportions? They need a couple of more wickets in this stage of next 3 to 4 overs. Very, very strong outfit. Jaisalmer Jaguars, they got a talented pace battery who were outstanding on the money from the word go. And batters with some experience to see them home, to see them get over the line. Will they be able to do it? That is the question in everyone's mind here in Kota. The spinner has done the trick, has done the damage to the opposition. Yadav bowled impressively, but conceded boundaries. Was a bit unfortunate because of the top edge travelling to the boundary. After being hit for 6, he has removed Sumit Sharma. The field remains same. Ajad is back and is looking to work the ball away on the onside, getting the leading edge. The ball trickles into the offside position where wicketkeeper goes there and picks up the ball and hurls the ball back to the bowler, who is enjoying good rhythm at the moment. Third man up in the circle, bit wide is fine leg up in the circle. Shot, and this time trying to work through the onside. Wide signal by the umpire. It can be testing. One more wicket here might just tilt the game in the bowling team's favour. A partnership, that's the demand from batting perspective. Gets in the edge, it's coming fine. Down towards the boundary, it's going to trickle into the boundary for 4. Yields a boundary through the inside edge. Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los Locks de 1107.7. Súbelo que esto es barrio fino. Súmale vamos pa' que mi gata prenda
1 for 31 in 4 overs for Team Jaisalmer Jaguars. 97 to win from 96 balls. Azad betting on 4 of 2 with the help of one streaky boundary. SRK is on to 8 of 8 with 2 fours, partnership 5 of 2 deliveries. 1 for 16 in 2 overs for Mirza. Yadav bowling 2 overs without taking any wicket. Going along nicely despite losing the wicket. Nitira Singh, right arm off break. Massive experience of playing T20 cricket domestically, and his experience is going to be handy from Jodhpur's perspective. Rides the bounce and glides the ball beautifully. Attractive boundary behind square on the offside. Sweet timing, silken boundary, sweet timing from SRK, barely a couple of yards, that was the space available for him to penetrate the ball through, and he was absolutely marvellous. He found that gap to perfection, just using the pace of the ball, and the timing was absolutely fantastic. He's back and he's pushing the ball into the offside. The ball is rushing away off his bat. Such a sweet timer of the cricket ball. He's betting on 12 of 10. And this time punches the ball into the ground on the offside to the man at the mid-off positions, putting the jersey number 9. Holding the ball and giving it back to the bowler. Nitira Singh just had to change his stroke, wanted to heave it away through the onside, eventually deciding to play it defensively back to the bowler with the vertical bat. Here goes right arm over the stumps into bowl to right-hand batsman, and a bit given and cashed on big time, but straight through to that fieldsman for 4 more. The girl them skill out, Shonda Paul, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty, baby girl, all my girls, all my girls. Shonda Paul say, well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right Shah Rukh Khan is putting on a show here. Shah Rukh Khan is putting on a show here with some delightful shots through the square of the wicket on the offside. And this time he finds the fieldsman. He's a beautiful timer of the ball and plays really well square of the wicket on the offside. Fine over from batting perspective. Couple of delightful boundaries. 5 overs bowled. It's 1 for 39. Jaisalmer Jaguars in the chase. Will there be any change in the field? Third man up in the circle, fine leg up in the circle. Man at the point position on the offsides, cover point, and cover in position as well. Mirza to continue. Hits him on the pad. Was moving forward. Not out is the signal from the umpire. Beautiful length. He's drawing the batsman forward. Nice loop, and the length that he's operating with is spot on. Hits it hard down the ground. Man available at the long on region. A single accrued, a single scampered through easily eventually.
Azad and Shahrukh batting together. Mirza into his third over. Draws the forward defensive stroke from the batsman, who tucks the ball away, nurdles the ball away to the mid-wicket position. No run. He's taking his time. Mirza from left arm round the wicket to right and better. Stroked away straight to the man at square position. Good bowling. Fancying a wicket here. Or he wants to just get through this spell. The right and better sporting the jersey number 9. Plays it defensively, back along the carpet, back to the bowler. 1 for 40. Last ball of the power play overs. The field restrictions will be lifted. Struck away. Fantastic hit, 6. Six overs bowled, 1 for 46. SRK is batting on 22 of 18 with 4 fours with the strike rate of 122, and Azad is batting on 5 for 4 with the help of 1 boundary. Spin to continue from the pavilion end. Playing a forcing stroke off the back foot. Mild appeal. 82 to win from 82. That's the game situation at the moment. That ball kept low. Was there a nick? I heard a sound. It's been given out. Caught behind. Two for 46. 82 to win from 81.
Tanmay Verma, new batter in. Another batsman with a lot of promise. Was doing the fielding at key positions in the slip and mid-wicket region in the first innings. And he's going to farm the strike now. They've been hitting boundaries with consummate ease, but they've been losing wickets at regular interval as well. That could be a cause of concern, but run rate has been quite healthy. And they're chasing a moderate target on this pitch, which could present some challenges with spinners in operation. You need to take all 10 wickets. That's the only way Team Jodhpur can win from here. With the red cap on. Plays defensively. Tanmay Verma in 20 matches, 589 runs with the average of 34. Has been a consistent performer for the team Jaisalmer Jaguars. Nitiraj, a wicket already to his credit. Cuts and cuts it well to the fielder who is sitting on the edge of the 30-yard circle on the offside to do the fielding. 46 for 2. 7 overs have been bowled here at the JK Pavilion International Cricket Stadium in Kota, Nayapura Kota, the capital of Hadod region. Seven runs and a wicket from the over number 7th. 2 for 46. Pius with 149 matches, 77 wickets with economies of 6.15. Has been introduced. Completely different type of bowling that both teams using. Jaisalmer heavily bent on operating with the fast bowlers. On the other hand, Jodhpur trusting their spin talent. That ball stayed low somehow. He managed to squeeze that one out on the offside. That ball stayed low, skidded through. Lovely evening here in Kota. He's beaten in the flight. Wanted to blast it through the offside. Wanted to hit it over the man at the long off position maybe. Then making a slight adjustment with his stroke. He wanted to hit to the cover rather than man at the mid off region. Short, and this time he waits and thuds the ball into the offside field for another single. Slowing down. With the spinners in operation, field restrictions lifted. Sometimes these small scores can be very, very tricky. This time goes on the back foot and carves the ball out into the covers to yield another single. Partnership. That's what you're trying to build at the moment through strike rotation. By going deep in the crease, creating the length to push the ball into the gap. Punish the poor deliveries at their disposal. Full delivery. Wanted to heave it over the top of mid-wicket. Not quite making the connection, was beaten again. Went for a powerful shot through the onside. Keeper was up to the task, collecting the ball and whipping the bails off.
This is very, very crucial period in play, a critical period. A wicket here will change the pendulum in favor of the team bowling at the moment. This time pedaled it round the corner. There's a misfield. There is a single. Couple of quiet overs from the Jodhpur team. 8 overs bowled, 2 for 48. An exhilarating Sunday evening here in Kota at the JK Pavilion International Cricket Stadium, hosting the 7th edition of Cricket Rajwada Cricket League 2023. Team number 2, match number 4. Jaisalmer in the chase, looking good at the moment, 2 for 48. Word of stump, left alone. Full delivery. Was there an edge? The wicket keeper is convinced, but not the umpire. Up in the air, fielder takes the catch. ये स्कोर निकल घर जाएगी इसे क्यों लिया है beautifully bowled, long off, long on. The wicket has just fallen. Will he accept the temptation? He's back and he works the ball away off his hips for a single. This time it drives the ball down the ground for a single.
This time he works the ball through the offside, wants a run, and he gets a run. Comes up around 15 yards from the batsman through the offside. Mid wicket, very, very straight on the edge of 30-yard circle. Distonia halts into his bowling run-up as the batsman wasn't ready to face delivery. Lovely delivery, gets the inside edge, shaving the stumps almost. Almost brushed onto the leg stump. Some perches when they're operating from the far end for the spinners. So with the left arm spinner now with the right arm spinner in operation. Birds flying low towards that point region, the offside. Short ball, it's been hiked away through the onside. Takes a single, wants a second sent back. Wild throw. They will come back for the second eventually. This is poor, very poor from the fielders. Punched down the ground through the offside for a single. And he pushes the ball down the ground for a single. Strikes him on the pad. Appeal was animated from the bowler. The keeper was in unison with his bowler, but the umpire wasn't interested in paying any heed to what transpired. He thought that that wasn't going on to hit the stumps. It was pitching just outside the leg stump. That could have been a thought behind ruling the batsman not out. $57 for 3. Restructuring the field.
plays it with a soft end. Once a run, chance for run out. He explodes at an on striker, just over the top of the stumps, and they will take additional run here as well. The match is tantalizingly poised, and to run it through in the commentary in Hindi language, it's going to be Suresh Goswami in the commentary box. Thank you. धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। जैसलमेर जैगवार भी फंसी हुई है। 11वां ओवर चल रहा है, 59 रन बने हैं, 3 विकेट खोए हैं। इस विकेट में बॉलरों के लिए जान है भाई। जोधपुर भी स्ट्रगल करती नजर आई थी इस विकेट के ऊपर, और इस समय जैसलमेर जैगवार भी के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार। बॉलरों के लिए मददगार ये विकेट नजर आ रहा है इस समय। जो औसत है वो बराबर इस समय चल रही है। करंट रन रेट की बात की जाए तो 5.71 का रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ के 7.16 का हो गया इस समय। कट किया, गली में फील्डर मौजूद, रन नहीं मिलेगा। नितिराज सिंह किफायती ओवर कर रहे हैं, लगातार चौथा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का। ये अंतिम ओवर है। 1 मेडन 14 रन 2 विकेट अब तक ले चुके हैं। फिर से अच्छी गेंद, पॉइंट पे थोड़ी सी मिसफील्ड, और दूसरा रन भी लेना चाहते थे लेकिन मिसफील्ड के चलते दूसरा रन पूरा कर लेंगे। जिस प्रकार जोधपुर जोधना के जो खिलाड़ी थे वो भी शुरू में स्ट्रगल करते नजर आए थे, वैसा ही कुछ जैसलमेर जैगवार के साथ। ये गेंद कट किया है पॉइंट की दिशा में, वह खिलाड़ी मौजूद, रन लेने की कोई संभावना है नहीं। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर जैसलमेर जैगवार का स्कोर है 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद को बैक पर जाके मिड विकेट दिशा की ओर खेल दिया। 1 रन के सहारे अब स्कोर बढ़कर जैसलमेर जैगवार का हो गया है 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शॉट खूबसूरत, लेकिन सीधा फील्डर के पास, रन नहीं मिलेगा। crickadda.com RCL 2023 सीजन नंबर 7। आज का ये दूसरा दिन, दूसरा मुकाबला जोधपुर जोधना वर्सेस जैसलमेर जैगवार के बीच में ये खेला जा रहा है। राइट आर्म लेग स्पिन है पीयूष, और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। मिसफील्ड काफी ज्यादातर देखने को मिली है। टॉस जीता था जोधपुर जोधना ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित अपने 20 ओवर में 127 रन बनाए और 128 रनों का लक्ष्य दिया है जैसलमेर जैगवार को, लेकिन दाद देनी होगी जैसलमेर जैगवार के गेंदबाजों की, जिन्होंने बांध के रखा है जोधपुर के गेंदबाजों ने जैसलमेर के बल्लेबाजों को। ये गेंद और कट किया है उसको, थर्डमैन की तरफ, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, गेंद को रोक नहीं पाएंगे, गेंद सी मारे का के बाहर, 4 रन।
Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. पीयूष की यह गेंद अपील हो रही है, तेज अपील, लेकिन अंपायर पे उसका असर नहीं। कुणाल सिंह और तन्मय वर्मा दोनों इस समय क्रीज पे जमे हुए हैं। दोनों के बीच में 19 गेंदों में 19 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और एक 30 से 40 रन की पार्टनरशिप होनी बहुत जरूरी है जैसलमेर जैगवार के लिए, अगर इस मैच को जीतना है तो। अच्छी गेंद धीरे से पुश कर दिया, ऑफ साइड की दिशा में खुद बॉलर आए, फॉलो थ्रो में फील किया और कोई रन नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति पर जैसलमेर जैगवार का स्कोर है 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कल भी 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे आपको। 4 बजे से जुड़ेंगे हम फिर से आपके साथ, उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स और जैसलमेर जैगवार। दूसरा मैच होगा जोधपुर जोधाना रॉयल्स वर्सेस अजमेर मेरू वॉरियर। बहुत ही बढ़िया और उम्दा मुकाबले होने वाले हैं। जैसे जैसे ये लीग आगे बढ़ती जाएगी बहुत ही बढ़िया और रोमांचक होती जाएगी। कुणाल सिंह के लिए ये गेंद अच्छी गेंद थी, मिडल और ऑफ स्टंप की गेंद, अंदर आती हुई गेंद, बिल्कुल बल्ले को पैड को साथ लिया, आराम से खेल दिया, कोई किसी रन बिना किसी रन के। 47 गेंदे 60 रन जैसलमेर जैगवार को। प्रहलाद यादव राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद छोटी गेंद, बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद थी, बल्लेबाज को चारों खाने चित करती हुई विकेट कीपर के हाथों में। एक अनियमित उछाल लेती हुई और बल्लेबाज को चौंकाती हुई, बिल्कुल चौंकाने हो गए उस समय। एक बार फिर प्रहलाद यादव, ये गेंद अच्छी गेंद, मिडिल ऑफ स्टंप की गेंद, फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा में बगैर किसी रन के।
एक बार फिर बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे गेंद, जैसे टप्पा खा रही है बिल्कुल बल्लेबाज के एकदम छाती पे या फिर पैरों पे। लाइन और लेंथ से नहीं भटके हैं प्रहलाद यादव। इनके पास पेस है, इनके पास लाइन और लेंथ है। एक बार फिर अच्छी गेंद और खेल दिया इसको पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जोधपुर के गेंदबाजों ने भी दबाव बनाया हुआ है। अच्छी गेंद, पैड लाइन पे गेंद, बढ़िया गेंद और इस शट डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। और कुछ ही पलों में रजवाड़ा क्रिकेट लीग के चेयरमैन जनाब आमीन पठान साहब यहां पहुंचने वाले हैं। बेसब्री से उनका इंतजार है। ये आरसीएल उन्हीं की देन है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं यंगस्टर को। यहां से खेलने वाले राजस्थान, आईपीएल, इंडिया सब जगह खेल रहे हैं। ये मायावी नगरी है, मायावी धरती है ये। उसका पूरा श्रेय जाता है इस आरसीएल के चेयरमैन जनाब आमीन पठान साहब को। कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया तरीके से इसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला। एक रन आसानी से पूरा कर लिया। इससे पिछला ओवर जो प्रहलाद यादव ने डाला, बढ़िया ओवर डाला, लगातार लाइन और लेंथ के साथ, पेस के साथ वो ओवर डाला था, रिदम के साथ उस ओवर की समाप्ति की थी। रजवाड़ा क्रिकेट लीग के चेयरमैन जनाब आमीन पठान साहब बस कुछ ही पलों में यहां पहुंचने वाले हैं। आप सभी दर्शकों के साथ रूबरू होंगे। अच्छी गेंद फ्रंट फुट पे आई, केवल उस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लगने भर दिया और कवर्स में फील्ड करके वापस थ्रो कर दिया बॉलर की तरफ। एक हल्की सी अपील जरूर हुई, लेकिन हुई किस बात की ये समझ में नहीं आया। अरशद मिर्जा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, फ्रंट फुट पे आकर गेंद को खेल दिया कवर्स में, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। ये देख के अच्छा लगा। ये माहौल बिल्कुल अच्छा लगता है। फील्डर गेंद को पकड़ के थ्रो करता है, उस टाइम नॉन स्ट्राइकर कहता कि चलिए आइए रन आउट कीजिए। और बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, बल्लेबाज एन टाइम पे, एन वक्त पे उस गेंद पे बल्ला लगाया और नीचे रहती हुई बॉल थी। और अपील, लेकिन उसका असर अंपायर पे नहीं है। और इसी के साथ 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 14 ओवर में जैसलमेर जैगवार ने 71 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में 57 रनों की जरूरत है जैसलमेर जैगवार को। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर अब 9.50 का हो गया है। यह है क्रिकेट, यह
अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 128 रन जैसलमेर जैगुआर को बनाने थे, लेकिन इस समय जैसलमेर जैगुआर के ऊपर काफी दबाव बनाया है जोधपुर जोधाना के गेंदबाजों ने, फील्डरों ने। Beaten outside the off stump. Tiwari was operating with some venom. Good comeback from team Jodhpur. After conceding early momentum to the opposition, there has been a great comeback. और हमारे बीच आरसीएल के चेयरमैन जनाब आमिर पठान साहब पहुंच चुके हैं। रजवाड़ा क्रिकेट लीग के चेयरमैन जनाब आमिर पठान साहब पहुंच चुके हैं और स्टेज पे मौजूद हैं। अच्छी गेंद, इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट की और खिलाड़ी वहां मौजूद हैं। एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों खिलाड़ी। रजवाड़ा क्रिकेट लीग के चेयरमैन जनाब आमिर पठान साहब और इन्हीं की देन से आज ये लीग इस प्लेटफॉर्म पे चल रही है। सीजन 7 है, डे नाइट ये लीग। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, लगातार देते आए हैं यंगस्टरों को और यहां से इन्हीं की देन से राजस्थान, आईपीएल और इंडिया के लिए भी खेलने वाले काफी सितारे मौजूद हैं। ये आरसीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसका पूरे श्रेय जाता है इस आरसीएल के चेयरमैन जनाब आमिर पठान साहब को। जितने भी अपने सितारे यहां आ रहे हैं ये बॉलीवुड के, वो भी इन्हीं की देन है, हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। हम मात्र भर टीवी पे देखा करते थे, लेकिन अब हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। एक बार फिर ये गेंद, अच्छी गेंद, फुल लेंथ अपील, लेकिन अंपायर पे उसका कोई असर नहीं। Coming back to the contribution from this league to cricket in general, plenty of players who featured in the 2017 for the RCL Rajwada Cricket League. They went on to represent Rajasthan in various age categories. Also, they played international cricket as well. Deepak Chahar, Khalil Ahmed. हाँ जी बिल्कुल, दीपक चहर और खलील अहमद यहाँ खेलने वाले, वो आज इंडिया खेल रहे हैं। Rahul Chahar, the leg spinner. Maipal Lamroad. Pankaj Singh, leading wicket taker in Ranji Trophy, in the history of Ranji Trophy, also featured in this tournament earlier. Going for a big booming shot, not quite making the connection. Straight through to the keeper. And that's what we saw in the first innings as well. Fast bowlers, if they can hit the right area, they can get something out of the pitch. बिल्कुल लाइन और लेंथ के साथ जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है तेज गेंदबाजों के द्वारा, वो काबिल तारीफ है। बल्लेबाज कुछ समझते उससे पहले ही गेंद विकेट कीपर के हाथों में, तो कहीं ना कहीं गेंद हरकत कर रही है इस समय। Also, we witnessed enthralling 100 today from Narendra Singh Tomar. In the air. Fieldsman can't get there. Valiant attempt. Just falling short of him. A sensational 100. This is the only second day of the competition, the way Narendra Singh Tomar batted today. 100 of 40 deliveries. Outstanding batting performance.
बिल्कुल नरेंद्र सिंह तोमर ने इसी विकेट के ऊपर आज अपना 100 पूरा किया था 39 डिलीवरी में, और क्या खूबसूरत वो शतक रहा। और इसी विकेट पे ये दोनों टीमें थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही हैं। और स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। You can see the frustration from the bowler trying to take the ball away from the right-hand batsman. He's inducing him into playing a false stroke but not keeping the line where he can force a mistake from the outer edge of the bat. Change in field. The fieldsman from the long off position goes inside the circle at mid-off position, who is very, very straight. He rides the bounce and glides the ball to the man with that throw with just one stump visible. A quick single taken. तो देवेंद्र जी, हम बात कर रहे थे उन सितारों की, यहाँ से खेलने वाले आज वो हिंदुस्तान खेल रहे हैं। ये एक सपना होता है कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं और वहाँ उस अपनी कंट्री के लिए खेलूं। तो कहीं ना कहीं यहाँ दीपक चाहर हैं, राहुल चार, महिपाल रोमरोर, पंकज सिंह, ये सारे सितारे यहीं से खेल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये आरसीएल है, ये यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपना हुनर दिखाओ और आगे बढ़ो। I think this is for the first time in the history of Kota. They're hosting a day-night event. Matches under lights. We've seen matches being played under lights at the SMS Cricket Stadium or the RC Cricket Academy, but not before. In the history, 140 years, the history of cricket, we saw a match under lights here. बिल्कुल, ये आरसीएल के जो चेयरमैन हैं जनाब आमिन पठान साहब, उन्हीं की देन है, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा सब कुछ ये संभव हो पाया है। सीजन 7 है, लगातार दिनों दिन ये जो आयोजन है सफल होता जा रहा है, एक बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म तैयार होता जा रहा है। Kota is famous for education, medical education, but sport is a big part of lives, common lives. In order to condition the lifestyle better, it's important to play some kind of a sport to keep the mind healthy as well as the body. With the wicketkeeper standing up to the stumps, spinner in operation. Short ball, and it's been thumped away down to the man at the long off position for a single. Three for 78, 15.1 overs gone. It's getting tighter. Now they need 50 runs to win from 29. 7 wickets standing. Tanmay Verma is batting on 13. Krunal Singh on 15. They need to accelerate. They need a boundary. Shot. It goes over the top. There's a field spin on the boundary at sweeper. It's spinning away from him. It's gone for 4. All this time, oh my love, where you been? Me, I'm going, don't you know? My love, I want you so. एक मिसफील्ड के चलते चौके मिला यहां पर जैसलमेर जैगुआर को। तो हम बात कर रहे थे जो फिल्मी सितारे हैं स्टेज पे मौजूद हैं, लगातार आते भी रहेंगे और हम अपनी आंखों के सामने देखते रहेंगे। बढ़िया गेंद, अच्छी बाल बाल बचे यहां पर, भाग्यशाली रही कि गेंद जाके विकेट पे नहीं लगी। आरसीएल के चेयरमैन जनाब आमिन पठान साहब, इस बार शॉट खेला है, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत शॉट और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन।
ओहो, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये स्थिति क्या रहेगी? ये झटका लगता हुआ यहां चौथा झटका लगा मैच दोनों तरफ घूमता रहा, कभी इधर कभी उधर। पिछले ओवर में तन्मय वर्मा ने बढ़िया स्ट्रोक खेले और इस अगले ओवर में कुणाल सिंह आउट हुए हैं। तो कभी उतार कभी चढ़ाव लगातार जारी रहा इस मैच के अंदर। 92 के कुल योग पर चौथा विकेट खोया। 17वां ओवर चल रहा है। 23 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता है जैसलमेर जैगुआर की टीम को। इस मैच पे कब्जा कौन जमाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन किफायती गेंदबाजी दोनों तरफ से। जब जोधपुर की टीम खेल रही थी तो जैसलमेर के जैगुआर के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, और अब जैसलमेर जैगुआर खेल रही है तो जोधपुर जोधाना के जो गेंदबाज हैं वो किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार दबाव बनाए हुए हैं। मैच कौन सी टीम जीतेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन दोनों तरफ से गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी बेहतर। और इसी विकेट पर पिछले मैच में उदयपुर के बल्लेबाज नरेंद्र सिंह तोमर ने शानदार 100 पूरा किया था। इस सीजन का वो पहला शतक। अच्छी गेंद, कप्तान अनस मलिक गए हैं खुद बल्लेबाजी के लिए। बढ़िया गेंद, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं शशांक तिवारी। अगर आप मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं और आपके पास लाइन और लेंथ सही है तो आप बढ़िया से बढ़िया बल्लेबाज को भी आप छका सकते हैं, बीट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही इस समय शशांक तिवारी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद, बीट किया, पूरी तरीके से बीट किया, रन लेने चाहते हैं, नॉन स्ट्राइकर की ओर थ्रो किया। भाग्यशाली रहे कि जाके स्टंप पे नहीं लगी गेंद, वरना जोखिम भरा रन के लिए दौड़ पड़े थे अनस मलिक। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी विकेट कीपर से और उसका फायदा उठाया यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। तन्मय वर्मा भी जानते हैं, काफी देर से जमे हुए बढ़िया स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। अनस मलिक नए नए बल्लेबाज आए हैं विकेट के ऊपर।
हवा में है गेंद, उस ओर फील्डर है और बहुत ही बेहतरीन कैच। तन्मय वर्मा, इस गेंद को कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश थी उनकी और गेंद काफी देर तक हवा में रही और कवर के जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे फील्डर थे उन्होंने आगे की तरफ दौड़ लगाते हुए एक ड्राइव लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा और वहां पर तन्मय वर्मा की पारी का अंत किया और टीम को यह 5वां झटका लगा। इस समय दबाव में है जैसलमेर जैगुआर की टीम। शशांक तिवारी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार दूसरा ओवर कर रहे हैं। 6 रन मात्र दिए हैं और 2 विकेट उनके खाते में चली गई है। अगर दोनों टीमों की जो विश्लेषण है, लेखा जोखा है, उनकी तरफ ध्यान दें तो तेज गेंदबाजों ने या यूं कहें कि गेंदबाजों ने ही दबदबा बनाया हुआ है अभी तक इस मैच पे, चाहे वो गेंदबाज जैसलमेर जैगुआर के हों चाहे वो जोधपुर जोधाना के हों। गेंदबाजी ही हावी रही है बल्लेबाजों पर इस मैच में। सचिन प्रेता आए हैं बल्लेबाजी के लिए, न्यू बैट्समैन सचिन प्रेता। आगे की गेंद, सीधा शॉट मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद और तेजी से दौड़ते हुए अपने छोर चेंज किए। सितारों से सजाइए स्टेज, रजवाड़ा क्रिकेट लीग का स्टेज। हमेशा की तरह यहां सितारे मौजूद होंगे। आपके चहेते सितारे आपकी आंखों के सामने नजर आएंगे। हमारे सितारे आरसीएल के चेयरमैन जनाब अमीन पठान, और उन्होंने ओहो बढ़िया बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई, फील्डर वहां मौजूद है। आरसीएल के चेयरमैन जनाब आमीन पठान साहब ने, वो तो खुद सितारे हैं और उनके साथ उन्होंने हमारे आंखों के सामने अन्य कुछ सितारे ला दिए। हम तो शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उनका दिल से कि कोटा की पावन धरती है, इस पे अन्य कुछ सितारे यहां आ रहे हैं। चीयर लीडर की अगर बात की जाए तो वो भी यहां थिरकती हुई नजर आ रही हैं। और क्यों ना आए, रजवाड़ा क्रिकेट लीग बहुत बड़ी लीग है। बार बार बताया कि चारों दिशाओं में इस लीग का नाम है और फर्स्ट टाइम ये 7वां सीजन डे नाइट crickadda.com रजवाड़ा क्रिकेट लीग। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जैसलमेर जैगुआर का स्कोर है 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर भटकते हुए गेंदबाज, पैड पे जरूर लगी लेकिन लेग स्टंप के ऊपर खिलाड़ी खड़े थे और अंपायर ने उस अपील को नकार दिया। प्रहलाद यादव, इनके पास बढ़िया पेस है, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं और अभी तक शानदार गेंदबाजी की है। और एक और मिसफील्ड, 4 रन।
लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने मिस फील्ड की, आसानी से वो गेंद को आराम से पकड़ रहे थे, लेकिन मिस होती हुई वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। जैसलमेर जैगवार की इसी के साथ 100 रन पूरे। एक बार फिर अच्छी गेंद, थर्ड मैन फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है, स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। पॉइंट की दिशा में खेल करके एक आसानी से एक रन पूरा कर लिया दोनों खिलाड़ियों ने। दूधिया रोशनी से नहाए ये स्टेडियम, बहुत ही खूबसूरत नजारा इस समय लग रहा है। काफी दर्शक जो हैं स्टेडियम की छत पे खड़े हैं और भरपूर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं इन चौके छक्कों का। बढ़िया शॉट और तेजी से रन पूरा करेंगे दोनों खिलाड़ी। आरसीएल सीजन 7 की ये ट्रॉफी, चमचमाती ट्रॉफी, इसके ऊपर सभी कप्तानों की नजर है और ये ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जो जदोजहद चल रही है, कसमकस चल रही है दोनों टीमों के बीच में, या यूं कहें कि जो 6 टीमें उनके बीच में, वो ट्रॉफी के लिए चल रही है। ये आड़ा टेढ़ा करने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए। With required rate increasing, shooting up, they need to find a boundary in some fashion, and they're trying to devise a way to attain a boundary. Not successful, but bowling has been top class in last few overs to tighten the screws on the opposition batters. They've been able to pin them down. अब मात्र 12 गेंदें शेष हैं, 26 रन जीत के लिए चाहिए जैसलमेर जैगवार की टीम को। 18 ओवर में 102 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर, और 5 विकेट जैसलमेर जैगवार टीम के पास मौजूद हैं। अभी सचिन प्रेता, अनस मलिक, खुद कप्तान इस समय क्रीज पे मौजूद हैं। जो कि बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर दोनों, और अपने फैंस जितने भी हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बिग बॉस फैम सैफ अली वगा, आरसीएल चेयरमैन जनाब आमिन पठान साहब, आरसीएल के डायरेक्टर अनास पठान, सभी मौजूद हैं ट्रॉफी के साथ, चमचमाती ट्रॉफी के साथ बिल्कुल खड़े होकर के वो अपना पोज दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा इस समय। चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है। Beaten. Shashak Tiwari runs in, drops it short, and this time he gets the edge through the offside for a single. Boundary is the need of the hour. How they're going to get it, from where he's going to get the boundary, that is the question. And the mind of the batters decided to change his bat. Will that yield different result for batters? They need a boundary. Man on the boundary at the longer position. Long on is also on the boundary. Full, and this has been worked away on the onside. Wants a run, takes a single. Is he thinking about going back for the second? Settling for a single. Singles won't do it. They need boundaries.
23 to win from 8. Two crucial deliveries in the contest. More changes inflicted by the captain in consultation with the bowler. They want to make sure that they got the fielders in position where they can create a dot ball. Good crowd in on this sporting Sunday evening here in Kota at the JK Pavilion Cricket Stadium. आरसीएल के चेयरमैन जनाब आमीन पठान साहब दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिला करके, और ये बहुत बड़ी महान शख्सियत है, सभी के दिलों की चहेते जनाब आमीन पठान साहब आरसीएल के चेयरमैन। जो शेफाली बगा, ये सभी जो सितारे हैं ना, ये सभी जितने भी दर्शक आए दिल से चाहते हैं और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया दिल से। 23 to win from 8. As a batsman, you feel pressure. A boundary can make a big difference. Goes big, high up in the air. Fielder takes the catch. Another wicket down. $23 to win from 7. 23 from 7. 6. A new batsman at the crease. Can he hit it straight away? What a dramatic comeback from Jodhpur team. Nobody would have thought at the halfway stage. They struggled hard to put a competitive score on the board. It was below par score. Spinners going for runs initially, but what a dramatic comeback. Shashak Tiwari now. This is a crucial ball in the match. Down the track, gets the thick outside edge. Beats the man on the boundary. It's gone for 4. $19 to win from 6. $19 to win from 6. The match is tantalizingly poised. Can the batting team win from here? It is a tough task, but it can be done, as we saw previously as well. It can be done. 19 from 6. $23 has come down to 19 now. 19 from 6. A lot of talk. It is going to be a Herculean task from the batting perspective to win. 19 runs to win from the final over. And he works the ball out into the offside position. They got the protection, keep it down to single. Excellent first delivery. 5 balls left.
18 to win. Beaten. Dot ball. Dot ball. 3 sixes in 4 deliveries. Every ball has to go for a boundary from here on. Edge to bay, down to third man. It's going fine. It's gone for 4. 4 runs. Fourteen to win from 3. 6-4-4 or 6-6-2. Goes back straight down the ground. It's gone for 4 more. He has absolutely murdered that one straight down the ground. A thumping stroke down the ground for 4. 10 from 2. 4 and 6 will do. 2 boundaries of 2 deliveries. More changes in the field. Deep mid wicket. Long on. Long off. Sweeper cover on the offside on the boundary. He wants more changes. 10 to 2. 1-6 is needed. Smoked away. Fielder on the boundary takes the catch. Haji. He has taken the catch. दुश्मन की हमने हिफाजत की है बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हम यारों बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हम यारों ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए 10 to win from the last ball. Works the ball through the offside. There is a protection there on the boundary. Win for Jodhpur. Incredible victory. Nobody would have thought at the halfway stage. It's been a dramatic comeback from Team Jodhpur. After getting a middling total, they've been able to defend it after conceding runs early on. But what a dramatic victory for Jodhpur. From nowhere to right there. They are victorious team in the second match today. It's been an entertaining day today. In the first game, Narendra Singh Tomar, with his vintage batsmanship, getting a century. In the second game, the fast bowlers from Jaisalmer were outstanding. And this comeback from Jodhpur bowlers, absolutely marvellous. A win for Jodhpur Jodhana Royals in the match number 4 of the competition. 2 matches scheduled for tomorrow as well, starting at 4 o'clock and 7:30 in the evening. Do join us then. Till then, we take you for the post-match presentation and some interviews. आरसीएल के चेयरमैन जनाब अमीन पठान साहब
यहाँ मौजूद हैं जो हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर, बिग बॉस फेम सैफ अली बगा, काफी सितारे मौजूद हैं और सही में पठान साहब सबकी जान है और इन्हीं के दम पे बलबूते पे सब कुछ ये संभव हो पाया है। इतना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आरसीएल कोई छोटी लीग नहीं है, बहुत बड़ी लीग है, चारों दिशाओं में इस लीग का नाम है और उसका पूरा श्रेय चेयरमैन जनाब आमिन पठान साहब, आरसीएल के जो चेयरमैन हैं, उनको ये श्रेय जाता है। इस लीग में काफ़ी नामी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं और यहाँ से खेलने वाले काफ़ी नामी खिलाड़ी भी बन भी चुके हैं और आईपीएल भी खेल रहे हैं और इंडिया भी खेल रहे हैं। इस मैच के हीरो शशांक तिवारी रहे हैं जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्म किया और जोधपुर जोधाना को जिताने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। शशांक तिवारी ने 3 ओवर 15 रन और 3 किफायती विकेट शुरू में वो निकाले। उसके बलबूते पर जोधपुर जोधाना रॉयल्स ये मैच 9 रनों से जीती है। 20 ओवर में 127 रन ही बना पाई थी जोधपुर जोधाना रॉयल्स और जैसलमेर जैगुआर को मात्र 118 पर ही रोक दिया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी इस समय। दोनों टीमें यहां पहुंच जाएं। जोधपुर जोधाना और जैसलमेर जैगुआर के दोनों टीमों के खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी यहां आ जाएं। आप आगे बस बात होनी मजा आ गया। हेलो, दोनों ही टीमें जल्द से जल्द स्टेज के सामने आ जाएं। कैप्टन्स,
दोनों ही कैप्टन अपनी टीमों को लेके शीघ्र आए। नहीं सुनते हैं। दोनों ही कैप्टन अपने अपनी टीमों को लेके आए। इस साइड आ जाइए आप लोग। Welcome to the post-match presentation of match number 4, Jodhpur Jodhana Royals versus Jaisalmer Jaguars, where Jodhpur Jodhana Royals won by 9 runs. I would like to start with thanking our sponsors, our title sponsor Crick Adda and other sponsors Sky247.net and Sat Sports News. I would like to invite our presentation party on my right, Mr. Amin Pathan, Chairman, RCL, Anas Pathan, Director, RCL, Jeetu Verma Jojo, Bollywood and Hollywood actor, Nagma Khan, Shaz Media, Vijay Sharma, President KDCA, Ankit Tyagi, Vice President KDCA,
Sanjay Sharma, Senior Vice President, KDCA. Now, I would like to invite the losing captain first from Jaisalmer Jaguars, Anas Malik. Anas, too close yet too far. आपको क्या लगा? क्या गलती हुई? फर्स्ट मैं बॉलिंग के बारे में बात करूंगा. बॉलिंग काफ़ी अच्छी की सारे बॉलर्स ने, और बैटिंग की बात रहती है पावर प्ले पे थोड़ा और अच्छा खेल सकते थे, और बीच में 2-4 ओवर क्या है थोड़ा ज़्यादा डॉट हो गए, तो थोड़ा उसमें कन्वर्ट करते तो शायद हम मैच जीते. Hard luck for today. Better luck next time. Thank you. That was the losing captain, Anas Malik. Now may I please invite the winning captain from Jodhpur Jodhana Royals, Rahul Bhatt. Congratulations, Rahul. एक लो टोटल था, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी टीम ने डिफेंड किया. बॉलर्स को आप आई थिंक सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे आज. हाँ, हमारी अच्छी बॉलिंग रही और हमें लग रहा था कि मारना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर, तो सेफ थे, अच्छे रन थे और कोई इतना लोड नहीं था. मतलब बॉलर पर अच्छी बॉलिंग करी सबने. बीच में आप क्या कह रहे थे बॉलर्स को अपने, क्या क्या आप उनको गाइडेंस दे रहे थे? कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, अपना बॉल डालो, डॉट डॉट डालते रहो, ज़्यादा विकेट पे मत डालो बस. All right, congratulations once again. So that was the winning captain, Rahul Bhatt, ladies and gentlemen. Now may I please invite the man of the match for tonight, Shashank Tiwari from Jodhpur Jodhana Royals. Shashank, congratulations. You played really well. 3 overs and you took 3 wickets. That was amazing. What were you thinking? मैम, कप्तान ने बोला था डॉट बॉल करनी है, वाइड नहीं डालना, वही करा. जी, आपकी टीम काफ़ी स्ट्रांग लग रही है. आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है पूरे टूर्नामेंट? मैम, बेस्ट करना है, बस यही है. All right, congratulations. Now may I please request him, Mr. Amin Pathan, to hand over the man of the match trophy to Shashank Tiwari. Congratulations, Shashank, and very well played, Jodhpur Jodhana Royals. Well, that's it for the presentation for tonight. We'll see you guys tomorrow sharp at 4 p.m. A very good night to all of you.